Right. So I think I started recording a little late, but not much has been covered. So checklist of a good stock, as I said, first point, a good stock should be available at a good valuation. P ratio should be less than 30. Okay, that's the first thing, preferably. And we'll study valuations in depth today. Second thing, and the most important thing, is that a good stock must have a profit uptrend. Okay, the job of a company is to constantly increase profits. Making profits is not fine. The job of a good company is to constantly increase profits. All right. We must have profit uptrend companies in our portfolio. Not having profit uptrend companies is a bad thing. All right. Third point, we must have future information available about the stock. Okay. There should be some future information which you must have about the stock. All right. Fourth, and I'll show you some quick examples also of everything, right? Fourth, you preferably, if possible, if HNIs are investing in the stock, right, in your stock, that should be taken as a validation signal, right? Who are HNIs? HNIs are high net worth individuals or smart investors who are also participating in the market, right? Why would a HNI buy a company? Because they are also interested in the stock. It indicates that smart, intelligent investors are also interested in your stock, right? Lastly, which is again optional, you should preferably buy stocks in emerging sectors. And what are emerging sectors? Electric vehicle, defense, semiconductor, railways, consumption, sustainability, green energy, etc. Right? So these are typically good sectors. Right? Now, let me, and as I said, right, if you are attending this session for the first time, this is a module 2 session, not module 1. Today, we will cover advanced concepts. It would be tough for you if you have not done module 1. No problem if you have not done it. Module 1 is available on YouTube. You can go to the YouTube channel and watch module 1 right after the meeting. Okay, but you have promised me that you will watch module 1, right? It's anyways available on YouTube. आप कभी भी देख सकते हैं, but please do watch module 1. That's very important, right? Now let us look at the profit uptrend behavior. Okay, and guys, we'll be discussing a lot of stocks. This will be a practical session, but don't think any stock is a buy sell recommendation or anything. Anyways, any stock in the world can go down. Stock market has no one can say the stock will go up with guarantee. No one can say the stock will go down with guarantee. I think nothing is on this. All the practical examples that we take are in spirit of learning. Okay, nothing is a buy sell recommendation. So I hope that's clear. Now, I have a question for everyone. Do you think this stock has a profit uptrend? Yes or no? Do you think this stock has a profit uptrend? Yes or no? Yes, right? Can you see that there are 6 or 7 increasing numbers in this company? 4.16, 4.91, 5.8, 7.35, 8.11, 8.29, 9.03, 10.14, right? Clear profit uptrend. Most likely, I will upload this session also on YouTube. All right. Can you see a profit uptrend in the bottom line also at net profit level? Yes, clear profit uptrend, right? This is a perfect uptrend. It is rare to find perfect uptrends, but there are perfect uptrends which exist in the market, right? And how many quarter uptrend? In the basic session, please do attend the basic session. At least 3 quarters of uptrend is the start of a long-term uptrend. But please do the basic session. I really request. All right. So this is an example of a profit uptrend. This company is constantly increasing profits. Okay. This is the example of a good company which is constantly increasing profits. It has profit uptrend, but there are other things, of course, which we will check. All right. So can you see the profit uptrend? 1, 8, 15, 25, 27.
Is it a perfect uptrend? Yes or no? Does this stock have a perfect uptrend? Yes or no? Perfect profit uptrend? Yes, right? It does have a perfect profit uptrend, right? Should we check both quarter uptrend or year-on-year uptrend or anyone? Every year-on-year uptrend starts with a short-term uptrend only. So most likely good stocks will always also have a yearly uptrend. दोनों पे आपको uptrend दिखाई देगा typically for a good stock. Okay. So this is a proper perfect uptrend. Okay. Let us look at another stock. Okay. And you can see that this stock is constantly going up. All right. Now, one question for everyone. Is this stock undervalued, overvalued, or fairly valued? Is this stock undervalued, overvalued, or fairly valued? We will learn that today. It is, I would say, slightly fairly valued or slightly overvalued. Not undervalued for sure. It's either fairly valued or slightly overvalued. Undervalued तो आप इसको नहीं बोल सकते. It is not less than 30 PE. It's either fairly valued. Someone is saying PEG ratio is less than 1. उससे फर्क नहीं पड़ता. Typically IT service companies को इतने high PEs नहीं मिलते हैं. It is fairly valued or slightly overvalued in my view, and I'll teach in-depth valuations in some time as well. All right. So let us take another example. Okay. So does this stock have a profit uptrend? Yes or no? Does this stock have a profit uptrend? It has a very clear profit uptrend. 1, 2, 3, 6, 14, 20, 35, 64, 75. Right? Even at quarterly level, see quarterly level, you will not see an uptrend because it's a seasonal company. It has lean quarters also. So therefore quarterly level पे आपको uptrend दिखाई नहीं देगा. ये seasonal company है, इसमें seasonality आती है, and therefore you will not see an uptrend at a quarterly level. Okay. For more details, again I am saying you must watch module 1. This is advanced module. I will not go into basics today. This will be slightly advanced. All right. So profit uptrend is the most important thing in a company. Someone is saying, shall we not check EPS? EPS and net profit are one and the same thing. Doesn't matter. EPS भी same ही चीज होती है. Net profit भी same ही चीज होता है. Net profit if you divide by number of shares, that's EPS. So EPS and net profit are one and the same thing. It's not different unless number of shares are changing, which doesn't happen that frequently. Right. Now let us look at another company. Right. Does this company have a profit uptrend? Does this company have a profit uptrend? Yes, it does have a profit uptrend as well. 1, 7, 21, 44. Very simple. Basic numbers. Profit uptrends are important. All right. So I hope that's very, very clear to everyone, right? That profit uptrends are supremely important. Okay. Is there anyone here on the call who loves loss-making companies? Do you want to be the owner of a loss-making company or a profit-making company? If given a choice, do you want to be the owner of a loss-making company or a profit-making company? Who loves a loss-making company here? That I love loss-making companies. Is there anyone who loves loss-making companies? Loss-making companies can go bankrupt. Profit-making companies cannot go bankrupt. All right. So profit uptrend is very, 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 very important. All right. So I think it's sort of summary from last time that profit uptrend is most important. Another thing is future information. We will deep dive into future information in some time. Okay. Let us quickly see some future information here itself. Let's see future information. Okay. So let us go to our discovery platform. How many quarters to assess profit uptrend? Please do watch module 1. Typically 2 to 3 quarters. Okay. Okay. Yeah. 1 second. Is this future information that this company has set up a wholly owned subsidiary to operate in green hydrogen and hydro, solar, wind, etc.? Is this futuristic information? Yes, it is futuristic information. The company will do something in the solar space, right? It is not quantitative future information, but it is qualitative future information, right? So future information is very important, right? Is this future information? Yes. This company will be making nuclear application seals. Okay.
So clearly the company will enter into the nuclear sector in some time, right? Very clear futuristic information. Now let us look at some more forms of futuristic information, right? Now, this company got a 30 crore order. Is this futuristic information? Yes or no? This 30 crore order will be executed in the future. This is futuristic information, right? Can you use futuristic information to predict the future? Yes. You should ideally have futuristic information to have a better understanding of the future, right? Is this futuristic information? Yes or no? The company received a 235 crore order. Is this futuristic information? Yes or no? Yes or no? Yes, right? And can everyone participate in the class, right? So futuristic information again is very, 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 very important. All right. Fourth point. Um, let's look at H&I buying. Okay. If we look at H&I buying, 1 second. How to know if the impact of futuristic information is already included in the stock price? Perfect question. We will answer this question today. Perfect question. We will answer this today in the latter half of the session. Typically, not much is included in future price. Indian stock markets don't know much. They are not, especially micro caps में किसी को पता ही नहीं होती information. तो कैसे ही पता वो करेंगे, ठीक है? Okay. Now, this company, Society Generale, is buying the stock Capacite Infra Projects. Okay. Is this important information? Yes or no? Is this important information? Yes or no? It is important information because we must think, why is Society Generale buying the stock? What is the rationale? And we click on here and we can get a sense of the mind. This company got a 453 crore order. This company got a 96 crore preferential allotment. This company got a 224 crore order. This company got a 474 crore order. Do you think Society Generale, do you think Society Generale knows about these orders or they don't know? Did they buy randomly or do they know about these orders? What do you think? Do they know about these orders or is it a fluke or they randomly just purchased कि मैं पैसा है तो कुछ भी खरीद लो? They know, right? They would have studied about it, right? This is public information. Everyone knows about these orders. In fact, good chance Society Generale ने जब खरीदा होगा उसको एक आध future order का भी पता होगा, right? Someone is saying one very good question. Someone is saying when somebody is buying, which means someone is selling, right? Now tell me, who is smart? Retail investors or HNIs? HNIs are full-time investors, retail investors are part-time investors. Who is smarter? HNIs or retail? Big investors are smarter. Everyone is saying HNI is smarter. Retail does profit booking. Who is a long-term investor? HNIs or retail? Retail is mostly traders. वो trade कर देंगे, trade करके चले जाएंगे. HNIs are typically long-term investors. ठीक है? Now, can I sell my stock to fund a marriage in my house? Yes, I can. Can I sell a stock to go for a holiday? Yes, I can. Can I sell a stock to do profit booking? Yes, I can. What is the reason for buying in a stock? There is only one reason to buy, but multiple reasons to sell. It's a very important learning. Only reason to buy is to make profit. और कोई reason हो ही नहीं सकता. Or in rare occasions, sometimes to misguide retail, but that's very, very rare, right? Only reason to buy is to make a profit. Multiple reasons to sell, one reason to buy. Multiple reasons to sell, one reason to buy. Very, very important. Right. So, Sanjay ji saying some example. Sanjay ji, please do watch module 1. If it is profit uptrend, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा profit uptrend. So please do watch module 1. Okay. Multiple reasons to sell, one reason to buy. Okay. Now this is the checklist of a good stock. Let us, if someone is joining us for the first time, this line is the Bible of investing. It's the Gita of investing. It's the Quran of investing. It's like any holy book of investing. I want profit uptrend. It's like अगर एक line में recording investing को सिखाना हो, I want profit uptrend is the line. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit घटेगा तो price घटेगा. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit घटेगा
तो प्राइस घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. कैन एवरीवन हाउ टू इंटरप्रेट नेगेटिव कैश फ्लो? कैश फ्लो, सी आई डोंट, मतलब इफ यू ट्रस्ट द प्रमोटर कैश फ्लो आ जाएगा. कैश फ्लो से फर्क ही नहीं पड़ता. देयर इज जीरो कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड कैश फ्लोस. यू कैन चेक. लॉन्ग टर्म में हमेशा कोरिलेशन रहता है, शॉर्ट टर्म में कोई कोरिलेशन नहीं रहता. लॉन्ग टर्म में कैश फ्लोज एंड प्राइसेस आर पॉजिटिवली, वेरी पॉजिटिवली कोरिलेटेड. शॉर्ट टर्म में कोई कोरिलेशन रहता नहीं. ठीक है. एंड इफ द प्रमोटर इज जेन्युइन, प्रमोटर कुछ हेरा फेरी नहीं कर रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज टिपिकली इक्वल टू कैश फ्लो, इवेंचुअली आ जाता है पैसा. तो कोई स्ट्रेस का बात नहीं. इनफैक्ट इतना आई डोंट इवन गो दैट मच डीप टू कैश फ्लो इफ आई ट्रस्ट द प्रमोटर. अगर प्रमोटर में विश्वास नहीं है तो बात अलग है, तो आप घुस जाओ. मैं बाय नेचर आई ट्रस्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमंस कि भाई इंसान चोरी नहीं करता अनलेस मजबूरी बहुत ज्यादा हो. चोर बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, जो चोर पैदा हुए होते हैं कि भाई हम तो चोरी ही करेंगे. तो इंसान, मोस्ट ह्यूमंस आर जेन्युइन, 95% आर जेन्युइन, 5% of वो I am always diversified, doesn't matter. So trust people. Let's make this world a good place also. We should trust people unless they betray you. So don't mistrust unless you have been betrayed by the same person. Till someone doesn't betray you, you can always trust that person. Or they sort of give you a signal कि bhai we can betray you in the future. ठीक है. So can everyone write this line down in the chat window? I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. Everyone must write down this line in the chat window. Right. Someone is asking how to compare profits. Please do watch first session. It's covered in the first session. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. I want profit uptrend. Profit uptrend is very, 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 very important. Right. I will stay away from loss-making companies. 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 Do anyone likes a loss here? Always stay away from loss-making companies. Losses are a bad thing. कोई लॉस से प्रॉफिट में आई हो वो अच्छी बात होती है. लॉस से प्रॉफिट में ना अच्छी बात होती है, उसको सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे. I will stay away from loss-making companies. Okay? अगर कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई हो तो क्या उसको प्रॉफिट अपट्रेंड बोल सकते हैं? हाँ, इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ प्रॉफिट अपट्रेंड. लॉस से प्रॉफिट में अपट्रेंड ही दिखाता है ना, इट्स एन अपट्रेंड. तो वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. बट लॉस टू प्रॉफिट इज अ एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अपट्रेंड. ठीक है. I will buy at good valuations. Always buy at good valuations. And we will study what good valuations are today, but always buy at good valuations. Can we write this down? I will buy at low PE. 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 Right? Initially, see, I am not saying high PE companies are bad, but preferably buy at low PEs. Okay? Preferably less than 30, especially in the initial part as a newbie investor. Always prefer buying at low PEs. You have huge valuation comforts. Right? I will buy at low PE is a very, 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 very important line. You must have future information to predict the future. Again, very important. You must have future information to predict the future. I want future information. I want future information. I want future information. I want future information. Future information is very important. We must have future information to predict the future. All right. I hope that's clear. That we must have future information. Can everyone write this down in the chat window as well? I want future information. 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 And see, someone is asking, why do you repeat? Repetition से ना दिमाग में चीजें घुस जाती हैं. There's a मुहावरा कि भाई आपको सेम चीज बार बार रिपीट करनी चाहिए, दिमाग में अच्छा घुसती है चीजें. Right? तो always repeat. That's the best way to get things deep inside your head. Subconscious में घुस जाएगा. I want future information. I want future information. I want future information. Right? So future information is very important. Again, always check what HNIs are doing in the market. I will make HNIs work for me. 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 Again, all this was covered in module 1. If you have not done module 1, please do module 1. Very, very, very important. Okay. I will make HNIs work for me. I will make HNIs work for me.
I will make HNIs work for me. I will make HNIs work for me. Right? Let's make HNIs work for ourselves. This is a summary of the first session. Structural business, profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. All right. This is the summary. Now, I think we have covered the summary. Let's move on to the second lecture itself from right away. Okay. So the first thing that we will learn today is how to calculate the P ratio of a stock. Okay. Okay. So let us look at how to calculate the P ratio of a stock. 1 second. So let us take some companies, KPI, Green, RMC, etc. Okay. All right. So if we go to this side, let's go to yeah. Let's look at this company called KPI Green Energy. All right. So if I look at KPI Green Energy, all right. So let's look at KPI Green Energy. What is the market cap of KPI Green Energy? What's the market cap of KPI Green Energy? 2979 crore, right? 2979 crore. And so let's write down the market cap of this company here. It's 2979 crore. What's the TTM PAT for this company? What's the PAT for this company TTM? TTM PAT is 110 crore, right? 110. Can everyone see 110? Yes or no? PAT is 110, right? So we write 110 here. Right, 110. And what's the P ratio? This is the P ratio, right? So 27 is the P ratio of this company. Is that clear to everyone? How to calculate the P ratio? P ratio is simply market cap divided by PAT, right? Very, very easy, of course. Supremely easy. What is market cap? Market cap is the total money needed to buy an entire company. पूरी company खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है? That is the P ratio. ठीक है? If I look at RMC switchgear, let's do the same thing for RMC switchgear. What's the market cap for RMC? Total market cap for RMC switchgear? 393 crore, right? 393 crore. What's the TTM PAT? What's the TTM PAT? TTM PAT is 12 crore. Right? TTM PAT is 12 crore. Is that clear to everyone? 12 crore? Trailing 12 months. So 393 and 12. Let us divide 393 and 12. What's the PE ratio? 32.8. Is P calculation clear to everyone? Is P calculation clear to everyone? Yes or no? Anyone who has doubts on P calculation? P calculation is simple market cap divided by TTM PAT. Okay. And vice versa, if you multiply TTM P with PAT, you get market cap as well. Anyone who has a doubt on P calculation? Right? So I hope this is very, very clear. You divide market cap by the PAT and you get the TTM P. Right? Now, the next question is how to assess if the P of a company is overvalued, undervalued, or fairly valued. How to guess if the P ratio of a company, if the company is overvalued, undervalued, or fairly valued. Right. So, basically, if I look at some these numbers, right? So, there are two ways to check if a company is overvalued, undervalued, or fairly valued. Okay. One is temporal comparison, and one is sectoral comparison. Okay. We will learn both today. What is temporal comparison? You compare the P of a company across time.
What is sectoral comparison? You compare the P of a company with respect to the peers of the company. एक में आप उसका पुराने P से आप कंपेयर करेंगे, एक में आप उसके दोस्तों से कंपेयर करेंगे, उसके पीयर से कंपेयर करेंगे, दोस्तों से कंपेयर करेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे. ठीक है. नाउ टेम्पोरल कंपैरिजन कब किया जाता है? लार्ज कैप्स. ठीक है, लार्ज कैप्स. सेक्टोरल कंपैरिजन इज इन स्मॉल कैप्स. ठीक है. तो स्मॉल कैप स्पेस में क्या होगा? सेक्टोरल कंपैरिजन. लार्ज कैप स्पेस में क्या होगा? टेम्पोरल कंपैरिजन. I hope that is very, very clear. Now, let us look at a large company called ICICI Bank. Okay. If I have to ask, is ICICI Bank overvalued, undervalued, or fairly valued? What do? I check the P ratio of a stock, okay, and compare with the historical P ratio of the company. Okay. So, if I look at the P of this company, right? If I look at the if I look at the 10-year P of this company, right? Is this stock overvalued, undervalued, or fairly valued? This stock is fairly valued. It's fairly valued. अगर आप लॉन्ग रन से कंपेयर करेंगे तो एकदम लाइन पे ही लाई करता है. इट्स अ वेरी फेयरली वैल्यूड स्टॉक, राइट. काफी फेयर वैल्यूएशन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. कोई वैल्यूएशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, राइट. इट्स अबव मीडियन पी. इसके हिस्टोरिकल से कंपेयर कीजिए दीपक भाई. इसके मीडियन पी से आप कंपेयर करेंगे तो 24-25 की बात है. तो ये 20 के आसपास ही रहता है इसका मीडियन पी. तो फेयरली वैल्यूड है इस टाइम पे, ओवर वैल्यूड तो है नहीं है. ठीक है, डिसेंटली फेयरली वैल्यूड इन माय व्यू. तभी ऊपर भी जा रहा था कि भाई इट्स अ डिसेंटली फेयरली वैल्यूड स्टॉक. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. लेट्स लुक एट रिलायंस. इज रिलायंस overvalued, undervalued, fairly valued? Is Reliance overvalued, undervalued, fairly valued? See, Reliance was at this point of time very overvalued. ठीक है. On 18 September 2020, it was very fair. It was overvalued at a 34-35 का P ratio. Can you see? At this point of time, it was overvalued when the P was 35. Right now, ये long run से थोड़ा ज्यादा है, but बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब आई थिंक 20 के आसपास है लॉन्ग रन, अभी 25 का वो है. तो इट्स नॉट वेरी फार गैप. मेरे हिसाब से रिलायंस फेयरली वैल्यूड है. इट्स नॉट ओवर वैल्यूड, बट मतलब बिकॉज द गैप बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नॉट दैट हाई. तो इफ द गैप बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सुपर हाई, देन इट मीन्स ओवर वैल्यूएशन. इफ द गैप इज नॉट दैट हाई, मतलब आप बोल सकते हो कि मोटा मोटी ठीक ठाक की वैल्यूएशन. समवन कैन आर्ग्यू कि यार ये तो मेरे को तो ओवर वैल्यूड लग रहा है क्योंकि लाइन से बहुत ऊपर है. बट मैं वही 5 साल की लाइन खींच दूंगा तो लाइन पे आ जाएगा. अगर मैं 5 साल की लाइन खींच दूंगा तो इट इज क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या है. ओवर वैल्यूड तो नहीं है, मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आप कोई भी लाइन ले लोगे, बहुत दूर नहीं है. इट्स अ रीजनेबली फेयरली वैल्यूड स्टॉक राइट नाउ. ठीक है. तो हमें ग्रॉसली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स कभी नहीं खरीदने. वी शुड नेवर बाय अ ग्रॉसली ओवर वैल्यूड स्टॉक. ओके. हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव टू कंसिडर? गुड क्वेश्चन. सी, ये इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता. 5 साल देख लो, 10 साल देख लो, थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है. लाइन से बहुत दूर नहीं होना चाहिए. लाइन से बहुत दूर मींस ग्रॉस ओवर वैल्यूएशन. लाइन के आसपास मींस फेयर वैल्यूएशन. एग्जैक्टली तो कोई मार्केट में कोई नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं है. लाइन से बहुत दूर नहीं होना चाहिए. ठीक है. अभी हम देखते हैं, लेट्स लुक एट किसको देखें. HDFC बैंक देख लेते हैं. HDFC बैंक. ठीक है. एक समझने सिंह के वन स्टॉक इन लार्ज कैप विच इज ओवर वैल्यूड, वो भी देख लेते हैं. इज HDFC बैंक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड? इज HDFC बैंक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड? Someone is saying, does this work on cyclical stocks? Cyclicals are for trading, they are not for investing. Please watch module 1. Cyclicals are not for investing, they are for trading. Okay. Is HDFC bank overvalued, undervalued, fairly valued? HDFC bank, I would say slightly, आप fairly बोल सकते हो, slightly undervalued बोल सकते हो. Fair valuation to undervaluation के आसपास है.
ओवर वैल्यूड तो कहीं से भी नहीं। अभी तक हमने मेजोरिटी स्टॉक्स जो देखे सारे फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही है, कोई बहुत ग्रॉसली ओवर वैल्यूड नहीं स्टॉक है अगर आप उसमें देखें। ठीक है, मार्केट्स आर वेरी क्लोज टू फेयर वैल्यूएशन, तभी वो राइज भी कर रही है क्योंकि काफी फेयरली वैल्यूड मार्केट्स। ठीक है, इज दिस क्लियर कि ये लाइन से नीचे है तो इसका फेयर वैल्यू टू अंडर वैल्यू बोल सकते हैं, इट्स अगेन नॉट फार फ्रॉम द लाइन, आई वुड से फेयर टू अंडर, फेयर वैल्यू टू अंडर वैल्यू। एक और देखते हैं आईटीसी। आईटीसी में देखेंगे, इज आईटीसी ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड? इट वाज ग्रॉसली ओवर वैल्यूड समवेयर अराउंड हियर, 2020 में बहुत ओवर वैल्यूड था। अभी फेयर वैल्यूएशन टू स्लाइटली स्लाइटली ऊपर ही है, फेयर टू स्लाइटली ओवर वैल्यूड क्योंकि लाइन से ऊपर लाई करता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे बहुत ही क्लीन था, यहाँ पे क्लियरली अंडर वैल्यूड था नीचे 2020 के आसपास, यहाँ पे फेयर वैल्यू टू ओवर वैल्यूएशन के आसपास है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, अगेन कोई ग्रॉसली ऊपर नहीं है। अभी कहते हैं ग्रॉस ओवर वैल्यूएशन, समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस ओवर वैल्यूएशन। लेट्स लुक एट टाटा एलेक्सी। ओके, was Tata Elxsi grossly overvalued on 1st April 2022? Was Tata Elxsi grossly overvalued on 1st April 2022? Yes, on 1 April 2022, Tata Elxsi was grossly overvalued. Is that correct? Yes or no? Today, it is very close to fair valuation again, or at this point of time, on 1st April 2022, Tata Elxsi was grossly overvalued. And anyone who purchased on 1 April 2022 is still struggling, 1.5 साल से स्टॉक वहीं का वहीं। ठीक है, तो वही है, वो ओवर वैल्यूड स्टॉक था, उस स्टॉक को उस टाइम पे उठाना नहीं चाहिए था। कैन वी अप्लाई द सेम इन ईटीएफ आल्सो? नो, वी शुड नॉट अप्लाई द सेम इन ईटीएफ। ऑलराइट, so is this clear? Is Tata Elxsi a clear example of overvalued stock at on 1st April 2022? Yes or no? It is very clear, 1st April 2022 it was overvalued, no questions about that, right? Very far from your line. It is very close to decent valuations right now, ज़्यादा कोई दूर नहीं है, it is very close to decent valuations. Is it close to decent valuations, yes or no? Yes, it is close to decent valuations right now. All right, now let us look at some small caps. Okay, so is this clear? Is temporal comparison clear to everyone? Yes or no? Is temporal comparison clear to everyone? Yes or no? Can we trust the valuation lines on screener? मोटा मोटी कर सकते हो, ठीक ठाक रहती है, कोई इतना दिक्कत नहीं आता है। या हाउ टू चेक पी फॉर माइक्रो कैप्स, कैलकुलेट कर लेंगे। या सो फॉर माइक्रो कैप्स द वे इज सेक्टोरल कंपैरिजन। व्हाट इज द वे इन माइक्रो कैप्स? सेक्टोरल कंपैरिजन। ऑलराइट, आईटी सर्विसेज 30 to 50 is the industry P ratio. Pharma 20 to 30 is the ratio. Commodity trading 5 to 15 is the ratio. Someone is asking about how to go about Adani Group. Adani Group does not follow conventional valuations. Adani Group it doesn't follow conventional valuations. It can't be predicted from conventional. It's a very different kind of a stock, right? So for consumer retail, what's the number? 30 to 100. For clean energy, 20 to 50. Electric vehicles, 30 to 90. Power generation, 20 to 30. Can you click a photograph of this chart? Iska photo le lo. Just click a photograph of this chart. If you look at the first number, right? Can you look at the first number, the starting number every time? If you look at all starting numbers, most start from 30. Someone is asking why does infra have 20? ये मार्केट ने बोला है, सोचो ये गॉस्पेल ट्रूथ है, ये क्यों होता है इस पे क्वेश्चन नहीं करते, इंडियन मार्केट ने डिसाइड किया, इट इज द डिसीजन ऑफ द इंडियन मार्केट। ठीक है, लेट्स नॉट क्वेश्चन दिस। ठीक है, इफ यू लुक एट द फर्स्ट नंबर, राइट, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर्स आर 30. द फर्स्ट नंबर हियर इज 30, 20 here, again close to 30, 30 here, 30 here, 30 here, 30 here, 20 here, 20 here, 30 here, 30 here, 30 here, 20 here, 40 here, 30 here, 30 here. So what's the most common number? Can you see the most common first number? It is 30, right?
the most common first number is 30. That is why I say typically below 30, the stock is mostly undervalued. Is a trading company at 30 PE undervalued? Is a commodity company at 30 PE undervalued? Yes or no? 30 can be considered a start of fair valuation for most. Yeah, you are right. Infra company at 30 PE is overvalued. Banking company at 30 PE is typically थोड़ा सा overvalued होगी. ठीक है. एंड ना इसको एकदम हार्ड रूल मत ले लेना. ये 20 का 25 चलता है, 20 का 20 थोड़ा बहुत 4-5 ऊपर नीचे चलता है, बट बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. या so I hope this is clear, right? What is how this is. Now let us take some examples of actual real companies. Okay, so IT का क्या है 30 to 50. Let's look at an IT service company. Okay, let's look at this company. Is this company overvalued, undervalued, fairly valued? It's at the very top range of IT service. 50 में पहुंच चुका है ये. I would say it's close to overvaluation. Fair value zone में है, but close to overvaluation. It's not cheap valuation तो कहीं से नहीं है. I would say fair to over. It's not grossly over, but it's fair to over. ठीक है. It's not grossly over. If you look at the chart, right? 50 में भी fair valuation आती है, but it is not grossly over. It is fair to over, very close to overvaluation. Right? Let us look at this company. Okay. Overvalued, undervalued, fairly valued. IT service company again. Overvalued, undervalued, fairly valued. It's slightly fair to under. 30 के पास है. ठीक है. Slightly under 30 के पास है, but fair to under बोल लो. मतलब very close to fair valuation. Is this clear? Is this clear to everyone? Fair to under, right? Clear to everyone? Yes or no? It is either under or fair. बहुत पास है fair valuation. So I hope this is very, very clear to everyone. Let us look at this company. Fair value to undervaluation. It is undervalued. Okay, it is below the median PE of IT sector. It's an undervalued company, right? Yeah. So I hope this is very, very, very clear. Okay. So I think we've learned how to check the PE of a stock, right? Let's take another example. Someone is saying book value is too high. Book value को मत देखो. Forget book value. Book value कुछ नहीं होता. Just forget it. मुझे भी सिखाया था. I forgot it. For me, book value doesn't exist now. So for most purposes, book value is not needed. फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है. Is this company overvalued, undervalued, fairly valued? 18.4 is the P ratio. Overvalued, undervalued, fairly valued. If I look at the chart, it is undervalued. Okay, clean as 20 to 50. It is kind of undervalued. All right. So I hope valuations are clear to everyone. Are valuations clear to everyone? Yes or no? Anyone who is not clear with valuations? It's simple. एक sectoral comparison करना है और temporal comparison करना है. ठीक है. Can P become negative? Negative P is a bad thing. Horribly bad thing. Negative P means that the company is loss making. Losses are bad. No one can buy a loss making company. Buying a loss making company is a bad thing. Is there anyone who wants to be the owner of a loss making company? No, right? कोई नहीं owner होना चाहेगा. We should not be the owner of a loss making company. It's a bad thing. One should not own a loss making company. Please give some examples on negative P. Negative P's are loss making companies. We don't talk about loss making companies. Talking about loss making companies is a sin. It's like how can you talk about a loss making company? We can't talk about loss making company. So we can never talk about loss making company. It's a bad thing. We can never buy a loss making company. We can't talk about a loss making company. It's not a good thing. It's a bad thing. Okay. So we will not talk about negative P's. That's not a good thing. Yeah. So I hope valuations are very, very clear to everyone. Okay. Now let us use a framework. Just 1 second.
Is there a role of EPS growing? Yes, we'll talk about EPS growing, right? We'll talk about it. ठीक है. How to calculate P correctly? This we have done. ठीक है. How to estimate 1 year forward price? This we'll learn now. How to estimate 1 year forward price? Okay. Let us learn this now. All right. So let us look at this company called this company, Bharat Wires. Okay. Does this company have a profit uptrend? Does this company have a profit uptrend? Yes or no? Can you see a profit uptrend in this company? Yes or no? Is the June result a bad result? It is a profit uptrend. हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो चलता है. इतना हर रोज थोड़ा ना बढ़ाएगा. मतलब it is not that easy to increase profits every quarter. हल्का सा dip पे 46 का 41 ही तो है, क्या दिक्कत है? Very small dip. Year on year compare करेंगे तो अच्छा वो है. Is it a profit uptrend? Yes or no? It's a very clear profit uptrend. A very clear profit uptrend. If I compare 41 with 21, 41 with 25, it is up. 46 is a very high baseline. Okay. Is there a profit uptrend here? Is there a profit uptrend here? Yes or no? Net profit? Can you see a profit uptrend in net profit? Yes. Okay. Now, next question. Okay, very interesting question. Predict the net profit of this company in September quarter. Predict the net profit of this company in September quarter. What will be the net profit of this company in September quarter? See, I would be a conservative predictor. I would predict 24 only. कि भैया जो क्या है यही चलेगा. 24 is a good conservative estimate of September quarter. Is that fair to say? Is 24 a good conservative estimate of September quarter? Someone is saying 30, someone is saying 28. भाई मैं बहुत conservative बंदा हूँ. मैं 30, 28 सब तो मुझे ज़्यादा लगेगा. Is 24 a good estimate of the September quarter? Yes or no? Anyone who disagrees? Anyone who disagrees? So 34 तो रहने दो, 24 मैं बोल रहा हूँ, right? Now, if this company post 24 in September quarter, what is the estimate of December quarter? What is the estimate of December quarter? Conservative. Again 24. Again 24. So I can safely say, most likely company, if not more, 24 करती रहेगी. That's the best guess. Based on this data, right? Based on this data, it will keep on doing 24. Right? So what will be the profit after tax of yearly profit after tax of this company after 1 year? What will be the yearly profit after tax of this company after 1 year? 24 into 4, which is equal to 96. 24 into 4, which is equal to 96. 24 into, is that clear to everyone? Profit PAT of this company after 1 year, best guess is 96. Okay. Can you say with guarantee that the profit after tax after 1 year will be 96? Can you say with guarantee? No. This business can face problems. बहुत कुछ हो सकता है. Earthquake आ सकता है, nuclear war हो सकता है. A lot of bad things can happen. But what's the best guess based on this data? The best guess is 24 into 4, which is 96. Exactly. No guarantee, just assumption looking previous data. Very important. There is no guarantee in stock market. It is an assumption, a smart assumption based on previous data. Okay. Now, let us look at some data for this company. Okay. Have you seen the self-help tool? Have you seen the self-help tool for Sovrenn? Yes or no? Has everyone seen the self-help tool? Yes or no? You should check the self-help tool. It is very fun. It's like super fun. Okay. मजा आता है इसे खेलने में. We should play with it. We are talking about uptrend. Okay. What's the name of this company? Bharat Wire Ropes. Right? Bharat Wire Ropes. What is the market cap of Bharat Wire Ropes? Market cap of Bharat Wire Ropes? 1423. Okay. 1423 crores.
What is the share price of Bharat Pyrox? 209. ठीक है. What's the sales of Bharat Pyrox? TTM sales? It is 615. Right? 615 crores. And what's the TTM PAT? 74 crores. 615 and 74. Right? We write 615 and 74. What is the last quarter profit? What is the last quarter profit? 24. Right? And what fair P should we give to this company? What fair P? In absence of any data, you can either take 30 as a number or the current P ratio. What is the current P ratio? 19. So we say that भाई इसका P change नहीं होने वाला, P 19 का 19 रहेगा. जो आज की डेट में है वही फ्यूचर में भी रहेगा. ठीक है. तो we put 19 here. Okay. So now what this tool does is that it predicts कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है. What is the 1 year forward PAT? What is the 1 year forward PAT? 96 last quarter profit into 4. Is that clear to everyone? Can you understand this number 96? Right? Everyone understands this number 96 crore? 24 into 4. Simple, right? What will be the 1 year forward market cap? Do you remember how we calculated P ratio? We calculated P ratio by dividing market cap upon PAT is P ratio. Okay. So P ratio into PAT is market cap. Is that correct? Market cap divided by PAT is P ratio. Then P ratio multiplied by PAT is market cap. If I multiply 27 by 110, I get 297. Right? Simple multiplication and division. Is that clear to everyone? So basically, if I have to predict the 1 year forward market cap, I multiply 96 with 19. Can we multiply 96 with 19? Yes or no? Forward profit multiplied by P ratio. Is this clear to everyone? Anyone who is not clear with this? Forward, what is the 1 year forward market cap? 96 multiplied by 19. Anyone who is not clear with this? Can everyone say yes? See, some people are saying yes, so I don't know if you're understanding. Someone is saying not clear. Okay. Some people are saying not clear. All right. So let us repeat it further. Okay. Now, what is P ratio? P ratio is market cap divided by PAT. ठीक है. तो इस केस में market cap थी हमारी, if you look at this data, right? 1423 and 74. Okay. 1423 and 74 and P ratio was 19. This upon this. ठीक है. Is this clear to everyone? कि P ratio was 19. Now हमने बोला PAT after 1 year. PAT after 1 year is 96. I hope this is clear. क्योंकि लास्ट क्वार्टर का 24 था और प्रॉफिट अप ट्रेंड था. अगर आपने बेसिक सेशन नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा शायद, तो आपको बेसिक सेशन पहले करना पड़ेगा. बट फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर पैट इज 24, तो 24 into 4 इज द बेस्ट केस. तो आपको 96 का पैट आ गया आफ्टर 1 year. व्हाट इज द पी आफ्टर 1 year? वी से दैट पी रिमेन्स द सेम, 19 का 19 रह जाएगा. व्हाट इज द मार्केट कैप आफ्टर 1 year? It's your this into this. Okay. 182. Right? So your market cap after 1 year will be 1824 crores. What's the upside? Upside is this 1824 upon 1423 minus 1. Okay. So market cap will increase from 1423 to 1824, which is roughly 28%. Right? 1423 से 1824 पहुंच जाएगी मार्केट कैप. And market cap and price are one in the same thing. Okay. Can everyone repeat after me? Market cap and price are one in the same thing in 99% cases. Market cap and price are proportional in 99% cases.
market cap and stock price are proportional in 99% cases. Okay, is that clear to everyone? So the upside in stock price is 28%. Is that clear to everyone? Yes or no? Okay. So I hope this is very clear to everyone. Calculator is accessible to all in website. Yes, calculator is accessible to all in website. It's free. Calculator to free. It's a free tool. Okay. Okay. So upside is low. And if I look at the tool, right? So this is what will happen after 1 year. After 1 year, 96 crore, 1824, 28%, 260. Okay. Now one question. Okay. Now one question. If someone is saying a catch here if overall market falls, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए, it doesn't matter. If the next quarter net profit is 10 crore, does this math hold valid? If the next quarter profit is 10 crore, does this math hold valid? No, it does not. This math is valid only if the uptrend continues. This math is valid only if the uptrend continues. Is that clear to everyone? Right. So this math is valid only if the uptrend continues and nothing else. If the next quarter is 10, uptrend is broken. And if you look at our first session's learnings, what do we hate? We hate sudden drop in profits. Okay. What do we hate? Sudden drop in profits. If profit falls suddenly, that's a horrible thing. Profit falling suddenly is a horrible thing, right? If someone sees a 10 here, it is a big red flag. Is this clear? That this math is valid only if the uptrend continues. Can everyone say yes if they're understanding? How about nearby 24? वो तो चलता है ना प्रभु भाई. Exactly तो नहीं आएगा. अगर 23 आ गया, is the math valid? If the number is 23, is the math valid? तब भी math चलेगी. Right. अगर 22 आ गया, तब भी math चलेगी. Please calculate again. एक example और ले लेंगे. Right. What should we do if a quarter falls due to one-time expense? One time से फर्क नहीं पड़ता. One time doesn't matter. Okay. सत्यव्रत भाई आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, टाइम थोड़ा कम है, आई विल ट्राई टू थोड़ा रश इट, मे बी एक एग्जांपल आई टेक एट द लेटर एंड एज वेल. ठीक है, तो आई होप दिस इज. एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, does this company have an uptrend? Yes or no? Does this company have an uptrend? Yes or no? Is there uptrend? What's the expectation for September quarter? What's the expectation for September quarter? 32, कोई बोला 35, 32, 34. आई वुड से सी यहाँ पे टैक्स थोड़ा कम है तो 31 मान लो, मतलब 32 के आसपास ही आएगा. 31, 32 ही मान लो, इतना ही आएगा. 32 इज अ गुड गेस, राइट? तो अगर 32 लेते हैं तो व्हाट्स द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर? इफ 32 इज द एस्टिमेट, व्हाट्स द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर? 32 into 4, 128, 128. 32 into 4, 128, right? So let us again put all this data into the tool. Let's go to here again. और आयन प्रो कितना मार्केट कैप है? 2627. ठीक है, 2627. शेयर प्राइस कितना है? 1152. वो कितना है आपका? पैट 713 एंड 109. ठीक है, 713 एंड 109. व्हाट वाज द नंबर है? 32. फेयर पी रेशियो करंट के बराबर डाल देते 25. ठीक है, तो वही 25 का नंबर डाल दिया जो यहाँ पे 25.
अब ये टूल करेगा कैलकुलेट, ठीक है। सी इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस टूल मत करना, ये टूल अजीब आंसर दे सकता है। इट इज एज जो आप इनपुट डालोगे उसी का आउटपुट देगा। इनपुट स्मार्टली डालना, दिस टूल कैन गिव ग्रॉसली रॉन्ग आंसर्स आल्सो। व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर 1 year? 128। आई होप दैट इज क्लियर। एक्सपेक्टेड 1 year फॉरवर्ड मार्केट कैप 128 into 25, 128 into 25, right? This number and this number, 128, 1 year forward profit into fair P, 25. तो 128 into 25, ठीक है, 3200, अपसाइड 22% आता है। Someone is saying P could reach 30, you are right, P 30 हो सकता है, तो अपसाइड बढ़ भी जा सकती है, तो वो कंटिंजेंट है, बढ़ भी सकता है, you are right, ठीक है। If the company is in database, it should take numbers automatically. अभी कर देंगे, अभी नहीं किया है, करेंगे अभी नहीं किया, ठीक है। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ टीटीएम सेल्स इन द टूल? कोई यूज नहीं है, ऐसे डाल दिया था, मतलब उसकी जरूरत नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो। ओके, नाउ वन क्वेश्चन समवन इज आस्किंग कि यार व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन पी रेशियो? व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन पी रेशियो? सी व्हेन मार्केट रियलाइजेस कि भाई ये तो अच्छी कंपनी है, तो ना नेचुरली एक पी बढ़ा देती है, उस पर काफी बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं और कंपनी का पी रीरेट हो जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं उनको टिपिकली 20 के आसपास का पी मिलता है। मिड लेवल कंपनीज होती हैं उनको 40 के आसपास का मिलता है। लार्ज कैप्स होती है 60 के आसपास का मिलता है। मैं बहुत बहुत एवरेज नंबर्स बता रहा हूँ। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसका पी एक्सपैंड होता रहता है। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आपको 20 के पी दिखेंगे, मिड कैप के आसपास 40 दिखेंगे, एंड लार्ज कैप में 60 भी दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी पी भी रिलेट होता रहता है। दैट्स हाउ इट टिपिकली वर्क्स, ठीक है। पीई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा एक्सपीरियंस से समझेगा, बट मतलब धीरे धीरे समझ आ जाएगा, डोंट डोंट वरी अबाउट बेसिकली, ठीक है। नाउ how's the session so far? Are you able to understand? Yes or no? How's the session so far? Are you able to understand? Yes or no? Is it easy to understand? Can everyone say yes or no? At least I know कि भाई अच्छा है या मुश्किल है, कैसा है, ठीक है। बेसिक है, इट इज क्लास 4 क्लास 5 मैथ्स, ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। सेल्फ हेल्प टूल वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, तो इट्स अ सेल्फ हेल्प टूल, ठीक है। नाउ देयर आर 4 more cases in self help tool, okay? If a company gets a large order, okay, now let us take some examples, okay, ठीक है। um let's take this example of this company called can you see my screen? Yes or no? Yes, हाँ दिख रहा है ना? Okay, can you see this here? Can you see this here? On 23rd May, सेल्फ हेल्प इज ऑन द वेबसाइट। संजय भाई ऐप पे नहीं होगा, वेबसाइट पे है, ये रहा सेल्फ हेल्प, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेल्फ हेल्प, ठीक है। ऐप में नहीं है सेल्फ हेल्प, ठीक है। कैन यू रीड दिस लाइन? व्हाट based on 23rd May, what was the order book of this company? On 23rd May, what was the order book of this company? On 23rd May, what was the order book of this company? Can you write this down? On 23rd May, two people have written 70. TTM is trailing 12 months. TTM is trailing 12 months. मैं समझा दूंगा TTM क्या होता है। 70 crores, right? सी ये 24 आपको दिख रहा है, बट ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, आया नहीं है। तो ऑर्डर बुक वॉज 70 ऑन 23rd में, ठीक है। नाउ एक ऑर्डर आ गया ऑन 28 जून, 120 crore का ओवर 4 years, ठीक है। व्हाट इज द पर ईयर ऑर्डर फॉर दिस कंपनी? 120 और 4 years है, तो पर ईयर का कितना ऑर्डर आया है? 30। सो व्हाट्स द ऑर्डर बुक ऑफ दिस कंपनी नाउ?
एक महीने पहले 70 था, अब एक महीने में कुछ बहुत उखाड़ तो नहीं लिया होगा, एक महीने पहले 70 था, अभी 30 का ऑर्डर आ गया, कितना हो गया ऑर्डर बुक? 70 प्लस 30 100, 70 जमा 30 100। इज 100 clear to everyone? Yes or no? Does this company have an order book of 100 crore? Yes or no? Yes. Okay. So let us look at this thing again. Okay. ठीक है, 100 crore और एग्जीक्यूशन पीरियड 12 months, 12 महीने। ठीक है, ओके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी आफ्टर 1 year? एक साल में 100 करोड़ के ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी आफ्टर 1 year? 100 crore is the expected revenue of this company, 100 crore after 1 year? Yes or no? Yes, right? 100 crore का रेवेन्यू आएगा। ओके, एक्सपेक्टेशन, is 100 guaranteed? Yes or no? Is 100 guaranteed? Yes or no? No guarantees. No guarantees. It's a guess, a smart prediction, but no guarantees. Nothing in the stock market is a guarantee. Okay? Nothing in the stock market is a guarantee. What's the profit margin of this company? Let us calculate the profit margin of this company. Okay. Current sales, current profit, and profit margin. Okay. What's the current sales of this company? Let's go to the website again. Okay. What's the current sales of this company? 58. Can you see 58 here? What's the profit? 16. 58 and 16. Right? So we go to the Excel. 58 is the sales. 16 is the profit. What's the profit margin? 28%. Does this company have 28% profit margin? Yes or no? Does this company have 28% profit margin? Yes or no? Okay. Anyone who feels no? This company has historically had 28% operating margin, net profit margin. So what's the PAT margin? 28%. Right? 28% we put here. What's the expected PAT of this company after 1 year? 100 crore का order book था, 28% PAT margin. What's the expected PAT of this company after 1 year? What's the expected PAT? 100% into 28, 28 crore. Is this clear to everyone? 28 crore. Right? ठीक है. So, what's the expected PAT after 1 year? 28 crore. Right? So 1 year forward PAT is 28 crore. What should be the PE of this company after 1 year? What should be the PE of this company after 1 year? $31.8, 30 ले सकते हैं. Can we take 30 as the PE? Yes or no? Can we take 30 as the PE? Yes or no? 30 ले सकते हैं. 31.8 है, 30 ले लो, करंट नंबर 30 ले लेते हैं. Okay. So let's take 30 as the PE after 1 year. What's the 1 year forward market cap? What's the 1 year forward market cap? It's 30 into 28, 840. Is that correct? 30 into 8, 28, 840. Okay. What's the current market cap? What's the current market cap? Current market cap of this company, if I look at data, 516 crore. Right? What's the percentage upside? 840 upon 516 minus 1, roughly 63%.
ठीक है, 840 डिवाइड बाय 516 माइनस 1 रफली 63%। इफ यू वांट टू बी कंजर्वेटिव आप 25 भी ले सकते हो। तो आपकी अपसाइड्स अलग अलग आती है डिपेंडिंग ऑन योर श्रद्धा बेसिकली एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, समवन कैन से कि यार आप थोड़ा एग्रेसिव एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे हिसाब से 25 का पैट आएगा। समवन इज सेइंग न्यू ऑर्डर कैन बी एट लोअर मार्जिन्स, यू आर राइट, इट कैन बी, लेट अस चेंज इट टू 25%। okay, so upsides will vary and depending on your understanding of the orders and your understanding of business you can play with the model. All right, so अभी मैंने 25% पैट मार्जिन कर दिया and these are the numbers. ठीक है, 21% upside. Is this clear to everyone? Yes or no? Anyone who is not clear with this? Anyone who doesn't understand order book math? And if you've not done the first session, please do the first session as well. That's very important. Okay, so anyone who has not done the first session, anyone who has not done the first session, and first session is on YouTube. First session is on YouTube. I'll share the link of the first session. ठीक है, ठीक है. Anyone who has not done the first session and is able to understand this. Anyone who has not done the first session but is able to understand this. Suraj can, Rishabh can, Umesh can, Gajanan ji can, Vikram can, Vikrant can. So I hope it is not that difficult. ठीक है. And someone said to repeat this again. A lot of people can. Rocket science, मतलब it's not very complicated, हो जाएगा. And अगर नहीं भी आ रहा समझ, एक दो बार करेंगे हो जाएगा. Okay. This company has 100 crore order book. Does anyone dispute it? Does anyone dispute that this company has a 100 crore order book? Yes or no? Anyone who disputes this fact? So this company has a 100 crore order book. It's a fact of nature, right? No one can dispute it. मतलब है तो है, कर ही नहीं सकते. उन्होंने बोला था 12 महीने में कर देंगे एग्जीक्यूट. जो 120 का है वो 3 महीने में करना था और जो 70 करोड़ का था वो भी उसमें करना था. ठीक है, तो ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे. तो हु एक साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ये क्लियर है सबको? एक साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, गारंटी से नहीं, प्रोबेबिलिटी गेस है हमारा. हमारा गेस 100 करोड़ का एक साल बाद. इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप दैट इज क्लियर कि एक साल बाद, क्योंकि ऑर्डर बुक 100 करोड़ की है जो कि 12 महीने में एग्जीक्यूट करनी है, एक साल बाद मोटा मोटा 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा. 100 करोड़ इज द रेवेन्यू आफ्टर 1 ईयर, मोटा मोटा एक्सपेक्टेड. पैट मार्जिन, कंपनी का करंट पैट मार्जिन है 28%. हम बोल रहे हैं कि हम कंजर्वेटिव लोग हैं, हम 28% नहीं माने. हम बोलेंगे कि यार कम पैट मार्जिन आएगा, 28 से कम आना चाहिए. हमने डाल दिया 25%. ठीक है कि भाई 100 करोड़ पे 25% का पैट मार्जिन आएगा. व्हाट इज पैट? पैट इज प्रॉफिट, राइट? समवन इज सेइंग ऑर्डर टू रेवेन्यू साइकिल, ऑर्डर बुक 100 करोड़ की है, 12 महीने का एग्जीक्यूशन पीरियड है. तो और आप इनवॉइसिंग साइकिल की बात कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिले कर लो, फर्क नहीं पड़ता. कैश साइकिल की बात मत करो, अकाउंटिंग हो जाएगी. एंड अगेन कैश फ्लो से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर प्रमोटर सही है. प्रमोटर चोर है तो बात अलग है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या चोर कंपनी से तो हम दूर ही रहेंगे. बट प्रमोटर सही है तो कैश फ्लो का इतना चिंता नहीं करना चाहिए, इट्स परफेक्टली फाइन, राइट? अब आपका पैट आ गया 25% का, तो 25 करोड़ का पैट आ गया, 25 करोड़ का पैट आ गया. 1 ईयर फॉरवर्ड पी हमने ले लिया 25, या आप 30 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. 1 ईयर फॉरवर्ड पी ले लिया हमने 30, एक साल बाद पी रेशियो 30 का रहेगा. तो व्हाट्स द 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप? 30 multiplied by 25, which is 750 crore. Current market cap is 516 crore. Upside is 45%. And as I said, market cap and share price are proportional. Market cap and share price are proportional. ठीक है. Now हमने बोला है कि इस कंपनी का पैट आएगा 25 करोड़ साल का, राइट? तो क्वार्टर का कितना आना चाहिए? क्वार्टर का कितना आना चाहिए? मोटा मोटी 6 करोड़ के आसपास का आना चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीवन? कि मोटा मोटा 6 करोड़ का पैट आएगा फॉर द क्वार्टर. ठीक है, आई होप दैट इज ऑल्सो फेयरली क्लियर कि मोटा मोटी 6 करोड़ की बात कर रहे हैं. इस कंपनी के रिजल्ट्स आ गए बाय द वे, तो रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं. ओके,
इसके रिजल्ट्स आ गए तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं। डज बुक वैल्यू नो रोल टू प्ले? देखिए संजय भाई, मैं तो यूज नहीं करता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक इतना कोई यूज रहता है। मेरी इन्वेस्टिंग अच्छी चलती है, मेरे को तो नहीं लगता। एंड आई डू वेरी सिंपल इन्वेस्टिंग, आप देख ही रहे होंगे, काफी सिंपल चीजें ही है। प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, उसी पे ही करते हैं हम तो, बहुत ही सिंपल करते हैं। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं थोड़े से लंबे समय का, उसके हिसाब से कर देते हैं। तो ये बुक वैल्यू, ये सब कॉम्प्लिकेशन में जाते नहीं। ओके, हमने क्या बोला था, क्वार्टर का प्रॉफिट कितना आएगा, 6 करोड़ का। मैं जूम कर रहा हूँ स्टॉक को, ठीक है। इसका रिजल्ट आ गया जून का। कितना प्रॉफिट आया है? कितना प्रॉफिट आया है? 6.05। Is this stock behaving as per our expectation? Yes or no? Does this stock is this stock behaving as per our expectation? Yes or no? Right? Is there a chance that the next quarter profit is 2 crore? Is there a chance that the next quarter profit is 2 crore? Yes, there is a chance, कोई गारंटी नहीं है। हमने एक मॉडल बनाया है, वो मॉडल चला तो चला, नहीं चला तो गलती हो गई। तो गलती तो हो सकती है, देखो कोई गारंटी नहीं है। बट अभी तक मॉडल सही काम कर रहा है, ठीक है। एज पर डेटा, हमारे पास जून का डेटा नहीं था। हमने नंबर कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन मॉडल। जून का डेटा फिट बैठ गया उस मॉडल के हिसाब से, राइट। क्या गारं क्या गारंटी थी कि फिट बैठता? नहीं भाई, गारंटी तो कोई नहीं होती स्टॉक मार्केट में। नो गारंटीज इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? एवरीवन अंडरस्टैंड्स द ऑर्डर बुक मैथ? राइट। So I hope this is very, very clear. Okay. So let us take a 2 minute break, 3, 4 minute break, drink water, and let's come back. Okay. All questions at the end of the session. Are you enjoying the session so far? Are you enjoying the session so far? Yes or no? Is it fun and easy? Is investing difficult? Yes or no? Is investing difficult? Investing is not difficult. कुछ काफी बेसिक होती है, सिंपल 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, उतना में हो जाता है। तो आई जस्ट कम बैक इन 5 minutes and you can like wait till that time.
Okay. So I think we can start, right? पीजी को भी मत देखिए वासु भाई, पीजी को देखने का पॉइंट नहीं है। ये सिंपल मैथ करते हैं, 1 साल बाद का बस प्रॉफिट वो निकालते रहते हैं बार बार। यही सिंपल तरीका रहता है। ठीक है। तो आई थिंक फॉर सम पीपल राइट, जिन्होंने फर्स्ट सेशन में किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ बेसिक्स भी मैं कवर करवा देता हूँ थोड़ा, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द बेसिक्स आल्सो। बाद में करना। Okay. So I think I hope everyone is back, right? And you are able to see the screen, right? ठीक है. All whatever we are learning today, right? All the math breaks if the uptrend breaks. Is this line clear to everyone? The math breaks if the uptrend breaks. Is this clear to everyone? Yes or no? This math is contingent on profit uptrend. We love profit uptrends. We hate losses. All our maths will break if the uptrend breaks. That's a very important line which must be remembered while we are thinking about this, right? So the math breaks if the uptrend breaks. Okay. We have learned the uptrend maths so far, and we have learned the large order math. Okay. Now we will learn the asset turnover math. Okay. Asset turnover math. Okay. Now, okay, let us look at some more data. Okay. Okay. Let's look at this company called Balu Forge. Can you take example of MCon for asset turnover? Fundraise किया है MCon ने. MCon doing preferential for asset turnover for asset capacity expansion. IPO किया होगा MCon ने, I guess. But capacity हाँ देख लेते हैं, MCon भी देखना होगा, देख लेंगे. I think थोड़ा check करना पड़ेगा. Okay, let me take this example first. Okay, how much money CWIP is 5 times? Oh wow, that's very interesting. How much money is this company Balu Forge raising? Can you read this and tell me how much money is Balu Forge raising? How much money is Balu Forge raising? Can you do the math? It approved 158 crore to non-promoters and 35 crore to promoters. 158 plus 35. Okay. 158 to non-promoters and 35 to promoters. So total कितना हुआ? 158 plus 35, 193 crores. 158 to promoters, non-promoters, and 35 to promoters. So 193 crore. Okay. Why is this company raising funding? Why is this company raising funding? It wants to set up a manufacturing facility. Okay. Is this clear? Why is this company raising funding? They will set up some manufacturing facility. Clear to everyone? Is this data helpful? Is the background data helpful to you? Can you understand the story with this data? कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में? Can you appreciate the background data, yes or no? Which you can see, read. See, this is a power of information. Information is helpful. कहानी समझा देती है information. Right? So this company wants to set up a manufacturing facility and has raised 193 crores for it. Okay. So let us go to our Excel. How much money has this company raised?
196 crore, 193 crore. Okay. So, okay. Okay. Now, what percentage of money will go to setting up the factory? 193 crore the company is raising. What percentage of money will go into setting up the factory? That data is unknown. हमें नहीं पता वो data. Let us take an assumption that 40% goes into setting up the factory. 40 to 50%. ठीक है? And बाकी working capital. So how much money will go into building new asset? 40% of 193, which is 77 crore. ठीक है? 40% of 193, which is 77 crore. Is this clear? That 77 crore is going to building new asset, and remaining is actually for working capital and for whatever. Right? Does everyone understand 193 and 77? Yes or no? Does everyone understand 193 and 77? These two numbers? Yes. 193 crore the company raised. Someone said a no. Who said a no? Let me check. No तो नहीं आया actually ज़्यादा. Okay, no तो नहीं आया. So 193 the company raised and 40% is going into building a factory. So 77 crore goes into building new asset. Okay. Now let us look at some numbers for this company. What's the current revenue for this company? What's the current revenue for this company? Let's go to the data. Okay. Current revenue is 327. Is this clear? Current revenue is 327 crore. What's the current profit? 39 crore. 327 crore and 39 crore. Right? So 327 crore and 39 crore. What's the profit margin for this company? What's the profit margin for this company? 12%. ये समझ गए सबको? 12% is the profit margin for this company. Clear to everyone? Yes, simple. 327 crore sales, 39 crore PAT, 12% net profit margin, PAT margin. What's the P ratio for this company currently? What's the P ratio for this company currently? If I look at the data, yeah. What's the P ratio for this company? What P ratio is? Calculate कर लेते हैं एक बार. PAT इसका है 39 का PAT है ना, और 1433 मार्केट कैप है. 1433 39. So market cap is आपकी current market cap is 1433. 1433. Profit is 39. So PE is आपका this upon this equal to 36. ठीक है? So 36 का P ratio इस कंपनी का. Is that clear to everyone? That this company has a P ratio 37. 1433 upon 39. Consolidated लेना होता है, standalone नहीं लेना होता. ठीक है? 37 P ratio. Is the P ratio incorrect here? Is the P ratio incorrect here? नहीं, सही है, एकदम बढ़िया है. 37 is the P ratio. ठीक है? Correct, perfect. हमने निकाल लिया 37 है. ठीक है? अभी जाते हैं वापस एक्सेल में. What's the current asset base of this company? अब यहाँ पे हम लाइफ में पहली बार बैलेंस शीट हल्की सी पढ़ेंगे. ठीक है? What's the current asset base of this company? मोटा मोटा. This company has roughly, this company has 48 crores of fixed assets. ठीक है? मोटा मोटी 50 करोड़ का एसेट बेस है. Okay? Is this clear? This company has 50 crores of fixed assets. What are fixed assets? फैक्ट्री, मशीनरी, इन सबको फिक्स एसेट बोलते हैं. आप खोलोगे तो दिख जाएगा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब मिला मिलो के आपका फिक्स एसेट्स आता है. ठीक है?
तो दिस कंपनी हैज 48 करोड़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रफली, ठीक है, 50 करोड़ का मोटा मोटी एसेट बेस है, ठीक है। अभी अगर हम जाते हैं तो 50 करोड़ एसेट बेस, 50 करोड़ से कंपनी रफली 320 करोड़ का रेवेन्यू करती है। तो व्हाट्स द एसेट टर्नओवर रेशियो, आपका मोटा मोटी 6 का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो फॉर एवरी 1 करोड़ ऑफ एसेट 6 करोड़ रेवेन्यू द कंपनी डज, फॉर एवरी 1 करोड़ ऑफ एसेट 6 crore of revenue is done. Is this clear? For every 1 crore of asset, 6 crore of revenue is done by the company. The company has 50 crore asset base, 320 crore revenue, 6 is the asset turnover ratio, 1 crore asset, 6 crore revenue. ठीक है? I hope this is very clear. For 77 crore asset, okay. अब asset turnover ratio 6 का आ रहा है मोटा मोटी. For 77 crore asset, कितना ठीक है, what revenue will come? अभी 6 का नहीं लेते, एसेट टर्नओवर रेशियो मान लेते हैं, यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा रहता है 6 का आ रहा है, राइट, 6 का, हम थोड़ा 5 का ले लेते हैं, लेट्स बी कंजर्वेटिव, 5 का ले लेते हैं, ठीक है, वी आर बीइंग कंजर्वेटिव है कि फॉर 77 5 का ले लेते हैं, कोई 4 का भी ले सकता है, आपकी मर्जी है, 4-5 का ले लो, अभी चलो 5 का ले लेते हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा रेवेन्यू विल दिस 77 ब्रिंग? सो 77 करोड़। अब इसकी कहानी सुनते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। कंपनी ने 77 करोड़ रुपए यूज किए और एक नई फैक्ट्री या फिर कि एक नया एसेट लगाया, उस नए एसेट से नया रेवेन्यू आएगा। वो नया रेवेन्यू कितना है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये स्टोरी समझ आती है सबको, कहानी? कंपनी ने पैसा उठाया, पैसे से वो लगाएगी फैक्ट्री, फैक्ट्री से आएगा रेवेन्यू। इज दिस क्लियर? कंपनी ने उठाया पैसा, पैसे से लगी फैक्ट्री, फैक्ट्री से आया रेवेन्यू। क्वेश्चन है कि कितना रेवेन्यू आएगा। तो कंपनी ने उठाए थे 193 करोड़, 77 करोड़ से उसे फैक्ट्री लगाई और जो भी लगाना था लगाया। 5 करोड़ का एसेट टर्नओवर रेशियो था, 386 करोड़ का रेवेन्यू आया मोटा मोटा। इज दिस क्लियर? मोटा मोटा, ठीक है, 385 करोड़ के आसपास। व्हाट इज द पैट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी? व्हाट इज द पैट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी? 12%, हमने ऊपर से निकाला था। सो व्हाट इज द न्यू एक्स्ट्रा पैट? इसमें 10% मान लो, थोड़ा कंजर्वेटिव ले लेते हैं। व्हाट इज द न्यू एक्स्ट्रा पैट? दिस इनटू दिस, आपका 40 करोड़ का पैट आ गया रफली, मोटा मोटा। इज दैट क्लियर? So 193 crore they raised, 77 crore goes into building new asset, 5 is the asset turnover ratio, 386 crore new revenue, इसको न्यू रेवेन्यू बोल देते हैं, न्यू रेवेन्यू। पैट मार्जिन इज 10%। व्हाट इज द न्यू पैट? न्यू इंक्रीमेंटल पैट इज 39। अब जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो तो चलता रहेगा, जो हो रहा है वो तो होता रहेगा। ओल्ड पैट कितना है? 39, राइट। तो आपका रेवेन्यू आफ्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना हो गया? रेवेन्यू हो गया दिस 386 प्लस दिस 327, ठीक है, 386 प्लस 327, एंड पैट कितना हो गया? इक्वल टू दिस प्लस दिस, रफली आपका 39 प्लस 39, ठीक है। तो आपका रफली 75-80 करोड़ का पैट आएगा, ठीक है, मोटा मोटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? स्टोरी अगेन क्या है? 193 करोड़ पैसा उठाया, 75 करोड़ 75 करोड़ गोज इनटू बिल्डिंग न्यू एसेट, 5 का टर्नओवर रेशियो था, 385 करोड़ न्यू रेवेन्यू, roughly 10% PAT margin, 39 crore new PAT, old PAT was also 39, new revenue is 386, this number plus this number, new PAT is this number plus this number,
व्हाट इज द पी रेशियो? करेंटली इसका 36 चल रहा है, 37। हम चलो 30 दे देते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होके 30 दे देते हैं। तो व्हाट इज द मार्केट कैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वो पूरा? ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर मार्केट कैप आपका? 30 इंटू 78 रफली, विच इज 2328। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर मार्केट कैप? 2328। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज 2328 क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इज 2328 क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सी, अगर आप एल्गोरिथम देखिए, राइट, हमारे एल्गोरिथम क्या है? हम सेम ही चीज करते हैं। हम निकालते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द पी रेशियो, गेट 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप। हाँ, करेंगे 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 वेंकी जी, करते हैं उसको। 1 ईयर फॉरवर्ड 5 मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, गेट 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप, डिवाइड 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय करंट मार्केट कैप, एंड मल्टीप्लाई करंट प्राइस अपसाइड। डू यू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम? हम क्या करते हैं? हम एग्जैक्ट चीज कॉपी किए जा रहे हैं बार बार। कैलकुलेट 1 ईयर फॉरवर्ड पैट, मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, get 1 year forward market cap, divide by your current market cap and get upsides. Is the algorithm clear to everyone? Yes or no? And can everyone write a yes or no? Because I am getting tired and I would appreciate if everyone responds, because that will be really helpful for me and my confidence and my energy levels will go up. Right? Algorithm clear to everyone? Right? Same ही चीज कर रहे हैं बार बार. Is this thing simple? Is this thing simple? Yes or no? बार बार हम पैट निकालेंगे, पी से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट कैप निकालेंगे, पैट निकालेंगे, पी से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट कैप निकालेंगे, एग्जैक्ट सेम थिंग अगेन। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, डेटा हमारे पास अलग होता है तो अलग तरीके से निकाल लेते हैं, बट होता करते सेम चीज। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी एज पर डेटा, एज पर स्क्रीनर? ओके, 1433 1433 करोड़। ठीक है, दिस कंपनी हैज 1433 करोड़ एज अ मार्केट कैप, बट very important thing, this company is an iceberg. This company is an iceberg. It has a hidden market cap. Why does this company have a hidden market cap? Because let us go back to our source of data. Okay, these shares are not yet listed. These shares are not yet listed. ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं क्योंकि ये प्रेफरेंशियल है, इसको लिस्ट होने में टाइम लगेगा. So these shares are hidden from public view right now, but they exist. Is this clear? कि ये शेयर्स अभी लिस्ट नहीं हुए हैं. एंड समवन विल आस्क मी कि आपको कैसे पता कि ये शेयर लिस्ट नहीं हुए हैं? राइट, यू विल आस्क मी आपको कैसे पता कि ये शेयर लिस्ट नहीं हुए हैं? पहली बात, शेयर लिस्टिंग में टाइम लगता है. दूसरी बात, इसको चेक कैसे करने की कब लिस्ट हुए हैं? अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे ना, प्रेफरेंशियल्स चेंज शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रेफरेंशियल्स चेंज शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो इसके जो नए शेयर हैं वो लिस्ट नहीं हुए हैं. इज दैट क्लियर? Preferentials change shareholding pattern because new people come, नए नॉन प्रमोटर आ गए हैं, कुछ कुछ है. Preferentials change shareholding pattern, new shares are getting issued. अगर ये समझ नहीं आ रहा तो याद कर लो. Preferentials change shareholding pattern is constant, so the new shares are not yet listed. Okay, so this company has a hidden market cap. This company is an iceberg. Can you write this down on the chart window? Preferential companies are icebergs. Can we write this down? Preferential companies are icebergs. In the chart window, can we write this down? Preferential companies are icebergs. Right? Preferential companies are like icebergs. They all have a hidden market cap. Okay. समझ गए ना हिडन मार्केट कैप क्यों है? क्योंकि ये शेयर लिस्ट नहीं हुए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ. राइट, इट हैज अ हिडन मार्केट कैप. अब निकालते हो हिडन मार्केट कैप कितना है.
ओके, अब इस कंपनी ने इशू किया है 1.37 शेयर्स प्लस 30 लाख वॉरेंट्स। तो कितने शेयर्स है? 1.37 प्लस 30 लाख। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस कंपनी हैज 1.67 crore shares yet to be listed. Shares yet to be listed. Okay. Current price per new share. Another very interesting thing. One more interesting thing. ये शेयर्स कितने प्राइस पर लिस्ट होंगे? हर कंपनी के शेयर का एक ही प्राइस होता है, तो जिस दिन लिस्टिंग होगी ना, इसका प्राइस भी 172 रहेगा। ठीक, अब आप मुझे बोलेंगे कि यार ये तो उनको 115 पे मिला था, राइट? अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने ये शेयर लिए प्रेफरेंशियल, उन्होंने 115 पे लिए हैं। कैन यू सी 115 है? यस और नो? You can see 115 rupees per share, right? These people are already sitting in profits. ये जो लोग हैं प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, इनका 115 का शेयर 172 जा चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं, अच्छे प्रॉफिट में बैठे जिन्होंने प्रेफरेंस दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट दीज पीपल आर ऑलरेडी सिटिंग इन प्रॉफिट्स? ठीक है, तो व्हाट्स द करंट प्राइस पर न्यू शेयर? 172। व्हाट्स द मार्केट कैप ऑफ फ्रेश शेयर्स? 287। ठीक है, so hidden market cap, what's the hidden market cap? 287 crore. 287 crore is the hidden market cap. Is this clear to everyone? 1.67 into 1.72, 287 crores of hidden market cap. So इसमें जो दिखता है iceberg, why do I call this iceberg? I call this an iceberg because they are not yet listed, it has an unlisted portion. When will this come to notice of the market? अभी 6 महीने में लिस्ट हो जाएंगी, 6 महीने के अंदर लिस्टिंग हो जाती है, 6 महीने में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। ओके, so what's the actual market cap of this company? What's the actual market cap of this company? 1433 plus 287, which is 1720. ठीक है, so 1720 is the actual market cap, actual current market cap. ठीक है, is this clear to everyone? Yes or no? 1720 actual current market cap. हमने फ्यूचर मार्केट कैप पोस्ट एक्सपेंशन निकाला था 2328, करंट एक्चुअल मार्केट कैप इज 1720. व्हाट्स द अपसाइड? दिस अपॉन दिस माइनस 35%. ठीक है, इज दिस अपसाइड guaranteed? No, nothing is guaranteed. Nothing in the stock market is guaranteed. अगर सब कुछ प्लान पे चला तो आएगा, नहीं चला तो नहीं है। ठीक है, someone is saying explain this again. Yeah, someone is saying can you repeat new shareholding pattern, shareholding market cap? Okay, this company, what is preferential? Okay, I think you many people may not be in the first class. What is preferential? So do you remember that Subhash Chandra Bose once said, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, right? What is preferential? Preferential is तुम मुझे शेयर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे शेयर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, दैट इज प्रेफरेंशियल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। व्हाट इज प्रेफरेंशियल? तुम मुझे शेयर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इज इट क्लियर? तुम मुझे शेयर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कंपनी ने 1.67 करोड़ शेयर्स दिए कुछ लोगों को। ठीक है, 1.67 करोड़ शेयर्स दिए कुछ लोगों को और उनसे कुछ पैसा लिया। ठीक है, वो पैसा था रफली 193 करोड़। तो इफ यू लुक एट दिस ट्रांजैक्शन, तुम मुझे 1.67 करोड़ शेयर्स दो
मैं तुम्हें 193 करोड़ पैसे दूंगा, तुम मुझे 1.67 करोड़ शेयर्स दो, मैं तुम्हें 193 करोड़ पैसे दूंगा। अब नए इन्वेस्टर के पास आ गए 1.67 करोड़ शेयर्स, जो उनके पास एक पेपर है कि भाई हमारे पास है 1.67 करोड़ शेयर्स, हर शेयर की वैल्यू इज 172, उनको मिला था 115 पे, बट अभी स्टॉक मार्केट ने प्राइस बढ़ा दिया है, तो करंट वैल्यू ऑफ दैट पेपर दैट दे होल्ड इज 172 रुपीज पर शेयर। इससे जो हिडन मार्केट कैप आता है दैट इज 27 करोड़। So there are 1.67 crore shares of this company lying with new investors. Each share has a price of 172, and the total market cap of shares these new investors hold is 287 crore. Market cap of existing shares is 1433 crore, and actual current market cap is 1720 crore. ठीक है, तो एक्चुअल करंट मार्केट कैप इज 1720 करोड़। फ्यूचर मार्केट कैप, इसमें आप ईपीएस ईपीएस मत निकालिए नकुल भाई, वो सब बहुत कंफ्यूजिंग है। ये ईपीएस कॉस्ट पर शेयर सब कंफ्यूजिंग चीजें बनाई हुई है, सिंपल करते हैं एकदम सिंपल। ठीक है, दिस विल डाइल्यूट प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज, कोई बात नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल, वन एग्जांपल, व्हाट इज व्हाट इज दीपिंदर गोयल शेयर होल्डिंग इन जोमैटो? व्हाट इज दीपिंदर गोयल शेयर होल्डिंग इन जोमैटो? ओके, लेट अस चेक। ओके, what is Dipinder Goyal's shareholding in Zomato? It is roughly 4%. Okay. His shareholding is reduced. Zomato ने कितना फंड रेजिंग किया, बट क्या वो बुरी बात थी? शेयर होल्डिंग रिडक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो जोमेटो में तो 4% तक हो गई है। 4%, 100 से 4। टिपिकली प्रमोटर 50% के ऊपर रहता है। इस केस में जब ये नए शेयर आएंगे, ठीक है, बालू फोर्ज में, तो मोटा मोटी मान लो 10-15% से ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये 65 है, 55 पहुंच जाएगा, ज्यादा रिडक्शन नहीं होने वाला। तो हल्का फुल्का रिडक्शन चलता है। सी स्टार्टअप में तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को 4% तक ले जाते हैं, राइट, हमने देखा 4% तक चला गया है, तो थोड़ा बहुत रिडक्शन तो चलता है, इट्स परफेक्टली फाइन। स्टार्टअप्स में तो बड़ा रिडक्शन भी चलता है, जैसे कि हमने देखा, यहाँ तो बहुत छोटा होने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जब प्रेफरेंशियल की लिस्टिंग होती है, ओके, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, आप मुझे ये बताएं, is this promoter selling share or is this preferential? Is this promoter selling shares or is this preferential? This is preferential. People think कि भाई शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो गई तो बेचा होगा, प्रेफरेंशियल से भी रिड्यूस होती है शेयर होल्डिंग जो होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ प्रेफरेंशियल। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ प्रेफरेंशियल। यस, so this is not selling, this is a common doubt which people have, but preferential dilute shareholding, some dilution is perfectly fine. Do you know what is my share? Do you know what is the shareholding pattern of Sovrenn? It is 100% with founders right now. We will dilute, but at later stages. Is it a bad thing? No. मेरी कंपनी में भी 100% है फाउंडर्स के पास. We will dilute, but at a later stage when we raise funding, not right now. Is dilution bad? No, dilution is not bad. अभी 100% है तो कम तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, कम तो होगा ही होगा। हम भी आईपीओ करेंगे, होगा ही होगा कम, तो हमारी ही कम होनी है। वो बुरी बात है नहीं। आपको लगता है हम फंड रेज करेंगे वो बुरी बात होगी हमारे लिए? डू यू थिंक सो कि हम फंड रेज करेंगे हमारे लिए बुरी बात होगी? उससे हम ग्रो करेंगे ना, राइट? तो ग्रोथ है इससे, तो थोड़ा बहुत डायल्यूशन चलता है, परफेक्टली फाइन, हम भी करेंगे, हमारा भी होगा, हर कंपनी करती है। ठीक है, एवरी कंपनी नीड्स फंड्स टू ग्रो। आईपीओ में भी डायल्यूशन होता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, so I hope this is very clear to everyone that upside potential is 35%. Is this guarantee? Guarantee किसी चीज की नहीं स्टॉक मार्केट। ठीक है, all this is contingent on uptrend, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
अब इसको टूल में कैसे करें, टूल में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे टूल में जाते हैं, सेम चीज करते हैं। ठीक है, तो टूल में गए, सॉरी 1 सेकेंड। राइट, सेल्फ हेल्प टूल में गए, प्रेफरेंशियल, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट, सर्च फॉर कंपनी नेम बालू फोर्स। ठीक है, मार्केट कैप कितनी है इसकी, कितनी थी मार्केट कैप, मार्केट कैप थी 1433। ठीक है, 1433, शेयर प्राइस कितना है 178, टीटीएम सेल्स कितनी है 329, पैट कितना है 39, फिक्स एसेट टर्नओवर कितना है 5 का 1। ठीक है, फंड कितना शेयर किया है 167,000,000, 115 का प्राइस प्राइस था, परसेंटेज ऑफ एसेट 40%, फेयर पी ले लेते हैं 30, कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द मनी रेस्ड 190 करोड़ मोटा मोटा। ठीक है, ये टूल भी कर देगा, जो भी हमने डिस्कस किया ना टूल भी कर देता है। 190 करोड़, पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल गोइंग फॉर एसेट 76 करोड़, revenue that will be generated from increase in asset 381 crore, old revenue 329 crore, new revenue 709 crore, expected 1 year forward part 84 crore, expected 1 year forward market cap 2438 crore. ये does everyone understand all these lines written on the screen? ये पूरा समझ रहा है? Is this tool useful? Is this tool useful? Yes or no? Right. So, and this is a free tool. Even if you don't have sovereign access, you can use this tool. It's perfectly fine. ठीक है, visible market cap 1433, hidden market cap 297 and actual market cap 1730। एंड ये जो भी हमने सब सीखा है आप टूल में खेल सकते हो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद द टूल। ठीक है, विल यू प्ले अराउंड विद द टूल, यस और नो? ठीक है, सो एंड सी यू कैन प्ले विद assumptions। ओके, लेट्स से हम एसेट टर्नओवर रेशियो को 4 कर लेते हैं। लेट्स से यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, आप बोल रहे हो 4 का आएगा, आप बोल रहे हो नहीं 30% का 30% ही जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट किया, ये एकदम मैंने कंजर्वेटिव कर दिया, अब आपकी अपसाइड से 11% की बचेगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या assumption डालना चाहते हो। हर इन्वेस्टर अपना अलग तरीके से चीजें करता है, तो आप खेल सकते हो डेटा के साथ। ठीक है, आपको मेरे assumption पे नहीं जाना, आप बोल रहे हो कि यार आदित्य आपका मुझे लॉजिक मेरे को लग रहा है कि आप ज्यादा अग्रेसिव हो, आप कंजर्वेटिव हो जाओ, तो आप डाल दो, आप कंजर्वेटिव assumption लो। समवन विल से आदित्य आप तो बहुत कंजर्वेटिव करते हो, आप कंजर्वेटिव कर रहे हो, आपका सही नहीं, तो आप एग्रेसिव डाल दो, तो वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। दिस टूल इज एज इंटेलिजेंट एज अ पर्सन यूजिंग द टूल। ठीक है, इससे गलती भी हो सकती है अगर आप स्मार्टली यूज नहीं करोगे, इससे अच्छे आंसर भी आ सकते हैं अगर आप स्मार्टली यूज करोगे। कभी कभार होता है कि आप स्मार्टली यूज करो, मैंने भी स्मार्टली यूज करने की कोशिश की, गलतियां हो सकती है। ठीक है, one very good question someone is asking, it will take time for the company to set up new asset, you are right, मे बी उनको 6 महीने लगेगा एसेट बनाने में, अगला 6 महीने लगेगा पीक कैलकुलेशन में आने में, तो 1 साल 1 डेढ़ साल बाद की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 ईयर इनटू द फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियसली अपसाइड्स कम हो गए हैं, 115 के आसपास ये स्टॉक काफी अच्छा। आपको स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए स्टॉक का। ओके, वन वन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। ओके, वन फन क्वेश्चन। ठीक है, इन ऑन 6 अप्रैल डिस्कवरी बिल्डकॉन, हाउ टू फाइंड व्हेन एचएनआई इज एंटरिंग, सॉवरेन बता देता है, सॉवरेन टेल्स व्हेन एचएनआई इज एंटरिंग। ऑन 13 अप्रैल डिस्कवरी बिल्डकॉन परचेज दिस कंपनी, यस और नो? ऑन 13 अप्रैल डिस्कवरी बिल्डकॉन परचेज दिस कंपनी, यस और नो? यस। On 6th April, money plant purchase this company. Yes or no? Right?
डू यू थिंक these HNIs had a hint of upcoming preferential? Good chance they had. गुड चांस इनको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि फंडिंग रेस हो सकती है. प्रमोटर बात करे, प्रेफरेंशियल रेस होने में 3 महीना लगता है. गुड चांस इनको मालूम होगा प्रेफरेंशियल की बातें चल रही हो. इज दैट फेयर टू से? इज अ गुड चांस कि शायद इनको मालूम. इज दैट क्लियर? इनको मालूम हो सकता है. ओके, नाउ समवन विल आस्क मी कि यार व्हाई वाज टानो सेलिंग? भाई टानो ने ना शेयर 10 रुपए में खरीदा था, वो प्रॉफिट बुक करके जा रहे थे. अगेन, मल्टीपल रीजंस फॉर सेलिंग, वन रीजन फॉर बाइंग. Yes, this is a special situation, Bharat bhai. Multiple reasons for selling, one reason for buying. Is this clear to everyone? There are multiple reasons for selling and one reason for buying. ठीक है? So I hope this is clear. And if you look at it, it was guessable कि ये स्टॉक में इतनी heavy buying चल रही थी, इतनी heavy buying चल रही थी कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है. तो a lot of people actually purchased the stock around March. उन्होंने पैसा भी बनाया. March was the best time to buy the stock. ठीक है, तब अपसाइड्स बहुत अच्छे थे. Is this priced in? See, 90 से 180 पहुंच गया. अपसाइड्स अभी कम बचे हैं. हमने जो अपसाइड्स निकाले छोटे बचे हैं ना. आप खुद ही देख लो कितना अपसाइड पुट बचा है. आप ऐसे लोगे तो अपसाइड्स काफी कम हुए हैं. मतलब 80 से बहुत कम हुए हैं. अभी भी है अपसाइड थोड़े बहुत एज पर मैथ, बट पहले से तो काफी कम हुए हैं. एज पर मैथ हमारा 40% अपसाइड बचता है, तो मेजोरिटी प्राइसिंग हो चुका है. बट अभी भी थोड़ा बचा एज पर दिस मैथ. अब आप मैथ चेंज कर लो तो आपकी प्राइसिंग चेंज हो जाएगी. ठीक है. Will preferential shares get booked by people before listing? No, that's not possible. Preferential shares have a lock-in. Even after listing, they can't sell till 6 months. ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक को उल्लू बनाया भाग गए. They can't sell preferential shares till they get listed for 6 months. ठीक है. तो yeah. So I hope this is clear. Now, one more question. Okay. Let us look at a high P company. ठीक है. Okay. This company got a 10,000 crore order over 24 months. ठीक है. 10,000 crore order over 24 months. ओके, तो ये पढ़ लेना. तो इसका करंट रेवेन्यू है 1,000 करोड़ रुपए. ठीक है. अब इसमें ना एक चीज चेक कर लेना, इसमें कुछ 10 ईयर का भी था. 10 ईयर का भी था इसमें कुछ. आई थिंक सर्विसिंग 10 ईयर तक की है. शायद ये कंपनी 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है अगले साल बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर इटसेल्फ. ठीक है. अब क्या है, ये जो स्टॉक है ये है बहुत हाई पी रेशियो पे. ठीक है. ये स्टॉक अभी है कुछ 146 के पी रेशियो पे. अब आती है यहाँ पे कंफ्यूजन कि भाई ये पी रेशियो हाई है बट इसको ऑर्डर बहुत बड़ा मिला हुआ है. अब क्या करें? ठीक है. इसमें आता है क्वेश्चन, क्योंकि आप इसकी फॉरवर्ड अर्निंग्स निकालोगे ना अच्छे आ जाएंगे, और इसमें आप इवन 50 का पी रेशियो दोगे तो भी अच्छा डेटा आ सकता है. ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा मिला हुआ है जो ऑर्डर. ऐसे केसेस में स्टॉक मार्केट कंफ्यूज रहता है. मैं पर्सनली हाई पीस को एंटर नहीं करता. आई नेवर बाय एनीथिंग अबव 70 पी रेशियो. बट अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप न्यूबी हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए 70 से ऊपर. मैं तो नहीं करता. बट अगर आपको थोड़ा खेलना है आप नाथ नाथ कर सकते हो. आप टफ है खेलना, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा खेलना चाहिए, मैं तो खुद भी नहीं खेलता. बट जो एक क्वेश्चन आता है ना, आर हाई पी रेशियो स्टॉक्स बैड? हाई पी रेशियो स्टॉक्स आर नॉट बैड. हाई पी रेशियो stocks can have massive growth, but you should be smart enough to predict the growth. If you're not smart enough or if you're not that experienced, don't do it. I preferably stay away from high P stocks. ठीक है. Are there some people who want to play with this? You can see a block deal in the stock. Some people think कि भाई इसके साथ खेला जा सकता है. ठीक है. तो some people feel इसके साथ खेला जा सकता है. ठीक है. अब लोगों की मर्जी है. देखिए मैं तो नहीं खेलूंगा, बट some people ask me always कि आप हाई पी से, आपको हाई पी खराब लगते हैं क्या? मुझे हाई पी खराब नहीं लगते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं तो खुद भी लेता हूँ कभी कभी, बट 100 के ऊपर तो मेरे को डर लगता है. मतलब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर बाइंग अबव 100. एंड मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है.
इंडियन स्टॉक मार्केट है 7,000 कंपनीज, तो मैं क्यों हाई पी पे जाऊँ ना? मेरा अपना चलता है, मेरे को तो 10-10 पी के स्टॉक भी मिलते हैं, तो मैं क्यों हाई पी पे जाऊँ? तो अगर मेरे पास डर्थ ऑफ कंपनीज होती कि भाई कंपनियां ही नहीं है, तो मैं फिर भी बोलता कि यार चलो 70 पे जाऊंगा। तो अच्छा, ये टीटीएमपी काम नहीं कर रहा है, ठीक करवा देंगे, इसको ठीक करवा देंगे, थोड़ा एरर हो सकता है, ठीक करवा दूंगा फिल्टर। ये कोई एरर है तो मुझे बता देना, आप मेरे को ईमेल पे कर देना मेरी उस पे कंपनी आईडी पे, तो मैं ठीक करवा दूंगा अगर कोई भी एरर है फिल्टर। ठीक है, तो anyway, तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, राइट? ऑल काइंड्स ऑफ someone is saying if the new part has upside of 80%, why not go for high P? संदीप भाई जा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली डर लगता है कभी कभी गलती हो गई, क्योंकि आप बहुत हैवी ग्रोथ्स की बात कर रहे हो तो एरर्स के चांस बढ़ जाते हैं। आई डोंट प्रेफर इट, बट समवन कैन गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट गो फॉर इट, यू शुड लर्न फ्रॉम योर ओन वो। आई डू माई ओन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, आई डोंट प्रेफर हाई पी, बट इनिशियली आई स्ट्रांगली फील कि वन शुड नॉट बी थोड़ा एडवेंचरस। वंस योर प्रोफेशनल 3 साल बाद आप कर सकते हो। मैं भी खेलता हूँ कभी कभी आई पी में, 70 में भी मैंने खरीदे हुए हैं, 80 में भी खरीदे हुए हैं, बट ज्यादा नहीं खेलता, मतलब रेयरली आई प्ले। ठीक है, so if you are a beginner investor, then don't play. I would suggest it's not a great idea to play in the initial part of it. ठीक है, ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मैं टूल से करवाऊंगा, हाइपोथेटिकल करते हैं। एक होता है कैपेसिटी एक्सपेंशन। ओके, व्हाट इज कैपेसिटी एक्सपेंशन? कैपेसिटी एक्सपेंशन इज कि यार आप पहले 100 टॉफी बनाते थे प्लांट में, अब आप 150 टॉफी बनाते हो। या पहले 100 गाड़ी बनाते थे, अब आप 150 गाड़ी बनाते हो। या पहले आप 100 बॉटल्स बनाते थे, अब आप 150 बॉटल्स बनाते हो। तो आप अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ मैं ये चीज हो रहा है। ठीक है, एक एक इंटरेस्टिंग चीज बाय द वे, जस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, इन जैसे हम ये कर रहे थे ना, 1433 शेयर प्राइस वाज 4178, सेल वाज 3.9, टीटीएम नेट प्रॉफिट वाज 39, सॉरी लॉन्च प्रेफरेंशियल। ठीक है, एसेट टर्नओवर 5, preferential price was 167, 15, 40, 50, calculate. इसमें can you see this add to watch list feature? Can everyone see add to watch list feature? Yes or no? So you can click on add to watch list. This company has been successfully added to your watch list. Okay. Now you can go to my watch list and see this added here. So you can do this math and create a watch list and see कि भाई क्या चल रहा है. Is this feature useful? Has anyone tried this feature? We just created this feature, so you can actually have a watch list of stocks. ठीक है, you can play around, you can even edit these numbers. आपको edit करने हैं तो आप खुद कर सकते हो कि यार इनके थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, तो आप yes, it will be in your watch list. Okay, it will be in your watch list. तो आप इसमें खुद भी edit कर सकते हो कि 45 कर दिया, any in the watch list, कितने मर्जी ऐड कर सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो watch list. ठीक है, तो ये watch list है, और आप डिस्कवरी से भी ऐड कर सकते हो। आप डिस्कवरी में गए, प्लीज एट डेट एंड करेंट मार्केट प्राइस व्हेन दिस वॉच। ठीक है, करवा देंगे चल भाई। ठीक है, ओके, कैन यू, यहां से भी आप कर सकते हो ऐड टू वॉच लिस्ट। कैन यू सी ऐड टू वॉच लिस्ट हियर आल्सो? ऐड टू वॉच लिस्ट। ओके, आप यहाँ पे गए, माय वॉच लिस्ट, आज डेट इंफ्रा आ गया विद डेटा 00। ठीक है, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एंड ऐड थिंग्स टू वॉच लिस्ट। ओके, ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देयर शुड बी नोट्स फीचर, बना देंगे कल्पेश भाई, थैंक यू फॉर, अच्छा आइडिया है, बना देंगे। सी सॉवरेन तो 6 महीने पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हम तो हर रोज बनाते रहते हैं। आप फीचर बताते जाओ, सॉवरेन में सब हो जाएगा। मेरे को आप बताते रहो क्या बनाना है, मैं सब बनवा दूंगा। तो ये नोट्स का फीचर है, मैं बनवा दूंगा, अच्छा आइडिया है। कल ही बना के 2-3 दिन में बना के लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी बना देंगे इसको, बहुत सिंपल भी है तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो ये हो गया। हम बात कर रहे थे कैपेसिटी एक्सपेंशन। ठीक है,
हाइपोथेटिकल कंपनी, ठीक है, करंट मार्केट कैप लेट्स से 400 करोड़, शेयर प्राइस 40, टीटीएम सेल्स लेट्स से 200, टीटीएम प्रॉफिट लेट्स से 20, कैपेसिटी एक्सपेंशन परसेंटेज 40%, फेयर पी लेट्स से 30, कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर आपने हाइपोथेटिकल डेटा डाला, 200 करोड़ की कंपनी थी, 20 करोड़ नेट प्रॉफिट, 40% से कैपेसिटी बढ़ा रही थी, ठीक है, ओके। आप देखेंगे इससे पूरा मैथ कर दिया, 20 करोड़, 28 करोड़, 840 करोड़, 110%, एंड 84 इज द प्राइस आफ्टर द मंथ। तो ये आपका पूरा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर देगा कि भाई 200 करोड़ से 40% बढ़ गई कैपेसिटी, तो 280 करोड़ की सेल्स, 28 करोड़ का पैट, 840 करोड़, 110% अपसाइड एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। कैपेसिटी एक्सपेंशन सिंपल है ना, शुड आई गो इनटू डेप्थ ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन? नो राइट, उसमें कुछ है नहीं करने का, सिंपल ही है, बस सेल्स 40% से बढ़ जाएगा, और आपका पैट 40% से बढ़ जाएगा, और आपका मार्केट कैप 40% से बढ़ जाएगा, और अगर पी रीरेटिंग करवा दोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कैन यू चेक एमकॉन फॉर सीडब्ल्यूआईपी एंड एसेट टर्नओवर? और संदीप भाई इसको बाद में करते हैं, क्लास के एंड में करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा रश करना है, क्लास के एंड में आप रुक जाना, मैं करवा लेता हूँ, कर देता हूँ। इट इज द सेम एज इंक्रीज इन एसेट टर्नओवर, थोड़ा बहुत वही है, मोटा मोटी सिंपल है, मतलब इसमें तो कैपेसिटी बता देते कितने से बढ़ा रहे हैं, तो मोटा मोटी वही है, ठीक है। um, ये एल्गोरिथम आप याद कर लो, जस्ट मेमोराइज दिस एल्गोरिथम। 1 year फॉरवर्ड मार्केट कैप, पी रेशियो, 1 year फॉरवर्ड मार्केट कैप, 1 year फॉरवर्ड पैट multiplied by P ratio, get 1 year forward market cap, divide current forward market cap by current market cap, multiply current price in upside. सी देखिए एक और चीज, जो भी शेयर पे डिस्कस की है वो सारे नीचे जा सकते हैं, ठीक है, ये मैथ सारी अब कंटिजेंट है ऑन वो, तो ये मत सोचना कि ये पक्का ऊपर जाएंगे, ये नीचे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो नथिंग इज ऑब्वियसली, एज आई सेड, नथिंग इज प्राइस लो, सारे स्टॉक नीचे जा सकते हैं। मैं प्राइस की बात भी नहीं करता, मैं प्रॉपर थ्योरी बता रहा हूँ कि थ्योरी से कैसे करते हैं। टिपिकली स्टॉक मार्केट does behave in theory, but अलग भी चलता है डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कल को न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कुछ एल्गोरिथम काम नहीं करेगी, ठीक है। सो बेसिकली इट्स नॉट गारंटी, नथिंग इज गारंटी, प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट, नथिंग इज गारंटी, ठीक है। तो ओके, वन मोर थिंग, आई होप, have you used the create a bucket feature in Sovrenn? Have you used the create a bucket feature in Sovrenn? Right. So you can create a bucket also in Sovrenn. Create a bucket, my bucket, description, promoter buying, excellent results in 2 consecutive quarters. ठीक है, okay. Let's look at वो excellent results March 23 and excellent results December 22. Create intersection. आपका my bucket बन गया and you can see, ठीक है। तो आपका ये सारा वो आ गया। सी ये पी थोड़ा गलत है, एक बार इसको मत देखना, आई थिंक गलती कर रखी है यहाँ पे इन्होंने, बट ये आपका इंटरसेक्शन बन गया। तो अब ये भी खेल सकते हो, यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड विद सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले अराउंड, आई डोंट थिंक किसी ने एक्सप्लोर किया होगा पूरा, मैंने खुद ने नहीं किया है, तो और मैं तो रोज ये देखता हूँ, तो मैंने खुद ने नहीं किया है, टीम काफी जल्दी जल्दी बनाती रहती है, तो आप प्ले कर सकते हो। सॉवरेन हैज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग एवरी डे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। या तो ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आप खेल सकते हो, जस्ट प्ले अराउंड विद दिस बकेट, या ठीक है। तो या तो एनीवे, ठीक है। तो या
So someone was talking about a company called Reflex Industry. Reflex Industry देख लेते हैं ऐसी randomly. Okay. Is Reflex a profit uptrend company? Yes or no? Is this company a profit uptrend company? Yes or no? Yes. And I hope you understand the logic of profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. See, very clear. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit बढ़ रहा है. ये ट्रेडिंग कंपनी है थोड़ी सी, तो आई थिंक ये 15 के पी पे मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है, बट क्लियरली चल रहा है भाई, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, क्लियरली इस पे चल रहा है. तो ये हमेशा रखिए, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. ठीक है. एनीवे मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया, बट प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ना इज ऑलवेज अ गुड थिंग. तो एनीवे आई थिंक दिस इज फाइन. ठीक है. तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? हाउ टू एस्टिमेट 1 year forward price. आई थिंक दिस इज क्लियर. कैन एवरीवन से यस इफ दिस इज क्लियर? So I hope this is very clear. What is the right P ratio for a stock? ये तो हमने valuations पढ़ ही लिए हैं. Then this is fine. Okay. Now let us look at a very interesting insight. ठीक है. Float. Okay. If you have not done the first class, please do it. नहीं तो आप थोड़ा गलत सीख जाओगे. Float is the least important criteria. Okay. Can everyone write this down? Float is the least important criteria. Only then I will teach float, because then you. Okay. Float is the least important criteria. ठीक है विक्रम भाई, मैं करवाता हूँ. ठीक है, got it. Float is the least important criteria, and I will tell you what is float later. Okay. Float is the least important criteria. Now let me tell you what is float and the game of float. ठीक है. Okay. Let us look at this stock. Get tailor made. Just go to shareholding pattern. Can you see shareholding pattern? Go to shareholding pattern. Click on here. Click on this here. Okay. Click on this thing. Click on this thing. Is training module of module 1 available on YouTube? Yes, it is available. अच्छा, एक बार मैं सबको YouTube लिंक भेज रहा हूँ so that you can watch the modules. Okay. मैं most likely ये भी डलवा दूंगा. See, वैसे मेरा proprietary content है, but मैंने बनाया है ये. But ठीक है, मतलब I think for larger public good, maybe I should make it available. So I will most likely put this video also on YouTube. मतलब ये सारा मेरा framework है जो मैंने खुद सोच के बनाया है, but ठीक है. I think it should be, the world should know how to properly invest. So I will post most likely this one also on YouTube. ठीक है. तो I will mostly post this also on YouTube. ठीक है. तो ये चैनल का लिंक है. I'll just post it so that you can just watch it. Most likely मैं ये वीडियो भी YouTube पे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा. पुराना वीडियो तो पड़ा ही है. ठीक है, on YouTube. ठीक है. तो you can just subscribe to the channel and learn it. ठीक है कि भाई कैसे. Okay. Now we go to flow. Click on public pattern of public shareholder. ठीक है. पब्लिक पैटर्न ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर क्लिक कर दिया. ठीक है. अब ये लिस्ट खुल गई है. ठीक है. व्हाट डज दिस मीन? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs. काफी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है. इसको सिंपल शब्दों में बोले तो ये रिटेल इन्वेस्टर. इसको सिंपल शब्दों में बोले रिटेल इन्वेस्टर. ठीक है. इस स्टॉक में कितने रिटेल इन्वेस्टर है? इस स्टॉक में 186 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं. कितने हैं? 186. They hold 817900 shares, which is 7.7% of the shareholding pattern. Is this clear to everyone? That they hold 7.7% shares of the company. Okay. The lower this number, the better it is for the company, provided all else is equal. The lower this number, the better it is for the company. Why is it better for the company? जब स्टॉक ऊपर जाता है,
हु सेल्स? डज रिटेल सेल और डज एचएनआई सेल? जब स्टॉक ऊपर जाता है, हु स्टार्ट्स प्रॉफिट बुकिंग? डू एचएनआईज डू प्रॉफिट बुकिंग, रिटेल डज प्रॉफिट बुकिंग? रिटेल डज प्रॉफिट बुकिंग. रिटेल प्रेजेंस इन द स्टॉक इज नॉट अ ग्रेट थिंग. वो स्टॉक को धीरे से ऊपर जाने देंगे, मतलब सेलिंग करेंगे, स्टॉक को फेयर वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लगवाएंगे. द लोअर दिस नंबर द बेटर इट इज. अज्यूमिंग ऑल एल्स इज इक्वल. अगर आपको दो स्टॉक्स में टाई ब्रेक करना है तो फ्लोट इज द क्राइटेरिया. एंड एज आई सेड, फ्लोट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. Profit uptrend, good valuation, future information, HNI buying, great sector. ठीक है, this is the least important criteria. Okay, now very interesting thing. NSE में कैसे करना है? NSE में जाते हैं, फिर आज सिविल में जाते हैं. ओके, ठीक है. NSE में भी सेम चीज करनी होती है. कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में गए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में गए, व्यू ऑल में गए, इस पे क्लिक किया, या वीडियो में देख लेना, आपको दिख जाएगा कैसे पहुंचना है यहाँ तक. पब्लिक शेयर होल्डर में गए, ठीक है. ओके, हाउ मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड दिस स्टॉक कॉल्ड गिरिराज सिविल? हाउ मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड दिस स्टॉक कॉल्ड गिरिराज सिविल? 54. In a country of 140 crore people, only 54 people hold this stock. In a country of 140 crore people, only 54 people hold this stock. इस स्टॉक को खरीदना मुश्किल है, नामुमकिन है. मैं 2-3 महीने ट्राई किया, डिच मार दिया कि ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं खरीद पाया. 3% of the shareholding, very small. It's a super low float stock. Less than 5%. What is low float? Less than 5% is super low float. Less than 10 is low float. 20, I think 10 to 25 is moderate, and more than 25 is high float. मोटा मोटी है. Less than 5 is super low float. 5 to 10 is low float. 10 to 25 is moderate float. More than 25 is high float. All else being equal, prefer low float stocks. Okay. Now one basic question. If this number goes down, is this a good thing or a bad thing? If this number goes down across quarters, एक क्वार्टर में 100 था, नेक्स्ट क्वार्टर 54 है क्या? Is it a good thing or a bad thing? Now, is the number of retail investors going down in a stock good thing or a bad thing? It is typically a good thing because अगर रिटेल कम गए तो कौन बढ़ा है? एचएनआई बढ़ा होगा, एफआईआई बढ़ा होगा, डीआई बढ़ा होगा. तो रिटेल का माल उठा लिया एचएनआई, एफआईआई, डीआई ने. इसका क्या मतलब है? Why is HNI, FI, DI buying from retail? इसका ये मतलब है कि they know something which retail doesn't know. रिटेल उल्लू बन रही है, वो बेच रही है और एचएनआई खरीद रहे हैं. ठीक है. This number going down is typically a good. P will go up. Yes, you're right. Is it always a good thing? ऐसा always कुछ guarantee कुछ नहीं है. As I said, nothing is guaranteed. ठीक है. Low float stocks can have very high PEs. इसलिए someone was asking about Adani Group. Adani Group is a low float stock. Very difficult to predict. Low float stocks typically बहुत high PE में trade कर सकते हैं. ठीक है. So that's a game of float. And maybe I'll show you one more thing. ठीक है. So I'll show you one more thing. I'll show you an example. In microcap, don't we have fear of circuit up and down? How to handle? अगर आप पंप एंड डंप से दूर है, आप प्रॉफिट अपटेन, गुड वैल्यूएशन, फ्यूचर इंफॉर्मेशन, एचएनआई बाइंग, ग्रेट सेक्टर, इस पे खरीद रहे हैं, सर्किट से डरने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. पीपल आस्क मी कि यार आप माइक्रो कैप में हम फंस गए तो, ठीक है, पीपल आस्क मी हम माइक्रो कैप में फंस गए तो एक क्वेश्चन आता है, वो 2 लाख का वैल्यू आप मत समझिए मनीष भाई, वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो 2 लाख नॉमिनल शेयर कैपिटल है, वो आप उसको भी इग्नोर कर दीजिए, मतलब वो नॉमिनल शेयर कैपिटल पे निकाला जाता है, तो वो सिंपली रिटेल इन्वेस्टर्स ही है. एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, टाई इंडस्ट्रीज. ये कितनी बड़ी कंपनी है? 25 करोड़, 25 करोड़ की है. इज इट अ माइक्रो कैप? इट्स अ सुपर माइक्रो कैप. ठीक है, इससे छोटा तो क्या ही होगा. मेरे पास इस कंपनी का 1.5% पड़ा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. यू कैन सी माई नेम है आदित्य जोशी, राइट. 1.4%.
ये मेरे से गलती हो गया था एंड मेरे को जल्दी रियलाइज हो गया कि यार गलती कर दी है। ठीक है, आई रियलाइज कि यार ये तो थोड़ा गलती हो गया, मतलब खरीदने नहीं चाहिए थी। मैंने आराम से बेचा, लॉस में बेचा, आराम से बेचा, मैं चला गया। मेरे को 35% का लॉस हुआ था, बट मैं शांति से चला गया था। पैसा कभी नहीं फंसता। तो माइक्रो कैप में पैसा नहीं फंसता है अगर आप पंप एंड डंप से दूर रहो। पंप एंड डंप में पैसा फंसता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ, ये आप कंपनी देखिए। ठीक है, इस कंपनी में पैसा फंसा, आप देख रहे हैं लिक्विडिटी गायब हो गई। देख रहे हैं लिक्विडिटी गायब। ठीक है, ये था पंप एंड डंप। इसको पता करना was चाइल्ड्स प्ले। इसका पी रेशियो एट हाई था 287। विल यू बाय स्टॉक एट 287 का पी रेशियो? विल यू बाय स्टॉक एट 287 का पी रेशियो? विल यू एवर बाय स्टॉक एट 287 का पी रेशियो? द आंसर इज नो, नेवर, नेवर। वी विल नेवर बाय स्टॉक एट 287 का पी रेशियो। इफ यू आर बिगिनर, प्लीज 50 से ऊपर मत खरीदिएगा या 60 से ऊपर तो मत खरीदिएगा। प्रेफर बिलो 30 if you are a beginner. ठीक है, play conservative. You should always be conservative in the beginning as an investor. स्टॉक मार्केट बहुत रूथलेस जगह है, पैसा जा सकता है। डोंट बी एडवेंचरस, प्लीज डोंट बी एडवेंचरस विद स्टॉक। ठीक है, तो लिक्विडिटी इज अ मिथ, कोई लिक्विडिटी नहीं होती है। इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहता स्टॉक मार्केट में टिपिकली, अगर आप पंप एंड डंप से दूर है। अच्छा, वन फॉर एग्जांपल आई शो यू। ठीक है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, आर्काइव्स। ठीक है, मैंने मैंने मार्च 22 का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है। कैन यू सी मार्च 22 हियर, यस और नो? मार्च 22 का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब मैं खोल रहा हूँ जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जून 22 का। ठीक है, ये है जून का पैटर्न, ये है मार्च का पैटर्न। ठीक है, मार्च का पैटर्न एंड जून का पैटर्न। मार्च में थे 1346 रिटेल इन्वेस्टर्स। कितने थे? 1346 एंड 8.98। जून में थे 1232 एंड 8.6। क्या यहाँ पे कॉर्नरिंग हुई थी? Was cornering done here in the stock? Yes or no? Was cornering done in the stock? Yes or no? Did the number of retail investors reduce in the stock? Retail investors reduced from 1340, 1346 to 1232. Retail investors reduced from 1346 to 1232. Cornering happened in the stock. What happened to stock price after June? Um, uh, this was what happened to stock price after June. You can see this. सीधा 50 रुपए से 500 रुपए, 10x in 2-3 months। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ कॉर्नरिंग। इज कॉर्नरिंग ऑलवेज अ गुड थिंग? नो, इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, बट कॉर्नरिंग इज टिपिकली अ गुड थिंग। ठीक है, तो कॉर्नरिंग इज टिपिकली अ गुड थिंग, एज ऑलवेज नो गारंटी। ठीक है, ओके। हाउ टू डील विद फियर ऑफ लूजिंग मनी इन द मार्केट? लक्ष्य में आप एक बार सेशन एंड करने दो, उसके बाद पूछेगा। ठीक है, तो ये कॉर्नरिंग आप समझ गए ना? इस कॉर्नरिंग क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कि भाई नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कम हो गए, परसेंटेज कम हो गई, अच्छी बात होती है टिपिकली। गारंटी अगेन कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। Can everyone say yes? I think 4-5 people are saying yes. If everyone can say yes, that will be super helpful.
It will be like a motivation for me कि yeah, कि it is clear to everyone, right? Right. So I hope it is clear to everyone that this is how cornering happens. Right. One more interesting thing. Also include this information in Sovrenn. कर सकते हैं, ये करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कॉर्नरिंग का, ये अभी करते हैं. ठीक है. One more thing. हाँ. Bar of glory. Okay. So this huge bar with a high delivery percentage is called bar of glory. Okay. ये कोई लिटरेचर नहीं है, मेरा क्रिएशन है, इट्स माय इन्वेंशन. This big bar is called bar of glory. Okay. This means that some HNI purchased huge commodities in the company, huge chunks in the company. Why did this HNI purchase huge chunk in the company? इसने इतना बड़ा क्यों खरीदा? What do you think? Why do you think this HNI purchased such a big chunk in this company? Can you tell me? क्यों खरीदा होगा? इतना बड़ा बार क्यों बनाया? HNI expects the price to go up. Did the price go up? Yes. Did the price go up? Yes. ठीक है. Can we see another bar of glory? Let's look at another bar of glory. Okay. Can you see a bar of glory here? Can you see multiple bars of glory here? Right? Can you see the bar of glory here? 92% delivery. Delivery percentage should be very high in bar of glory. Okay. कि भाई डिलीवरी करवा रहा है. Did the stock price go up? लॉजिक इज सिंपल. इसको कुछ ऐसा पता है जो हमें से किसी को नहीं पता है. ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय. ठीक है. जो ये बंदा है बहुत तेज है, हम सबसे बहुत ज्यादा तेज है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और स्टॉक को स्टडी करना चाहिए कि भाई ये कौन है जो ऐसा कर रहा है. ठीक है. क्योंकि ये स्मार्ट है जो भी है. कैन यू सी दिस गोइंग अप? यस और नो? ठीक है. हाउ टू फाइंड बार ऑफ ग्लोरी? यार कोई ये कहीं तरीका नहीं है, ये तो मेरे को भी नहीं मिलता, तो ये इतना थोड़ा मुश्किल है. हम भी काफी बार लेट ढूंढते हैं, तो बट मुश्किल होता है. कैन यू सी बार ऑफ ग्लोरी है? 80% डिलीवरी. कैन यू सी बार ऑफ ग्लोरी है? सी द स्टॉक प्राइस गोइंग अप. This is the power of bar of glory. ठीक है. Okay. One recent bar of glory. This is another bar of glory. 93% delivery. How can we know the investor has sold? If the delivery is high, delivery percentage tells ki who bought. So delivery percentage is high. That means that someone is buying. ठीक है. Is bar of glory guaranteed to give you money? Is bar of glory guaranteed to give you money? It is not guaranteed. Someone told a very interesting thing. What is opposite of bar of glory? Whole of fall. Whole of fall. तो whole of fall नहीं होता, bar of fall होता है. एक्चुअली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. बार ऑफ फॉल ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. ये है बार ऑफ फॉल. इफ यू लुक एट डिलीवरी परसेंटेज 44%. रिटेल को माल चिपकाया और चले गए. दिस इज द बार ऑफ फॉल. स्टॉक को चढ़ाया ऊपर, स्टॉक हो गया हाई पी पे, रिटेल को माल चिपकाया, चले गए. ठीक है. सिंपली रिटेल को माल चिपकाया, चले गए. डिलीवरी 44%. ठीक है. सी डिलीवरी 44% है, रिटेल को माल चिपकाया गया है. वाइज डिलीवरी 44%. रिटेल ट्रेडिंग करता रहता है, उस दिन डिलीवरी लो होती है. आपस में सुबह खरीदेंगे, रात में बेच देंगे, तो ये करते हैं रिटेल. इनफैक्ट कुछ रिटेल तो ऐसे होते हैं कि सुबह बाय का भी खुद ही ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं, सेल का भी खुद ही ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं. रिटेल बहुत ट्रेडिंग करता है. तो ये 12 फॉल. ठीक है. अब क्या रिटेल हो गई? अब आप देखिए, बहुत फनी है. रिटेल डरी हुई है, स्टॉक नीचे जाया जा रहा है. रिटेल डर रही है, स्टॉक नीचे जाया जा रहा है. रिटेल ऑल डर रही है, स्टॉक नीचे जाया जा रहा है. रिटेल डर के खत्म हो गई, बहुत डर गई रिटेल कि भाई ये क्या हो गया, स्टॉक तो आधा हो गया है. अब आता है स्टॉक ऊपर जाता है. अब रिटेल
अब रिटेल डरी हुई है, रिटेल क्या करेगी भाई, मैं तो एंट्री प्राइस पे निकल जाएंगे, स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, सब निकल गए। एक और बन गया बार ऑफ ग्लोरी। तो पहले बना बार ऑफ फॉल, फिर बना बार ऑफ ग्लोरी यहाँ पे। तो यू कैन सी ये क्या किया, स्टॉक ऊपर गया एंड इस पे पी कितना था, इस पे पी था 150 170 का, रिटेल का चिपकाया 170 पे, रिटेल स्टॉक गया नीचे, करेक्ट हुआ, होना ही था 170 पे, कौन खरीदता है देख लो, खुद ही देख लो कितने में था, 170 पे पहुंच गया था स्टॉक। ठीक है, रिटेल को चिपकाया, टाइम करेक्शन हुआ, धीरे 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 आया, वापस चढ़ने लग गया एक पॉइंट के बाद। तो ये है बार ऑफ फॉल एंड बार ऑफ ग्लोरी। ठीक है, इट्स वेरी फन, बहुत मजा आता है सब देखकर कि भाई स्टॉक मार्केट कितना लॉजिकल है, कि ऊपर गया स्टॉक, पी हुआ हाई, रिटेल आ गया फोमो में, रिटेल को चिपकाया गया स्टॉक, रिटेल डरता गया डरता गया डरता गया, अब स्टॉक ऊपर जा रहा है, रिटेल एग्जिट करता जा रहा है, एग्जिट करता जा रहा है, एग्जिट करता जा रहा है, अब बार ऑफ ग्लोरी फिर से बनी। ठीक है, क्या ये जानबूझ के हुआ, ये जानबूझ के नहीं, मार्केट फोर्सेस होते हैं, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये ऐसे ही चलती है स्टॉक मार्केट। तो रिटेल क्योंकि उनको समझता नहीं है, तो वो अजीब डिसीजन लेते हैं, ये जानबूझ के नहीं होता, ये नॉर्मल मार्केट कोई मैनिपुलेशन, वेरी नॉर्मल बिहेवियर फॉर मार्केट। ठीक है, तो बट दिस इज मार्केट साइकोलॉजी बेसिकली। ठीक है, for bar of glory how much volumes, at least 4-5% of the company, at least 2% of the company, कंपनी का 2% बिक गया। ठीक है, मैं आपको एक और बार ऑफ ग्लोरी दिखा देता हूँ। मैं तो पहले कभी कभार, मैंने तो ब्लाइंडली बार ऑफ ग्लोरी भी ट्रेड किया है, मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करता था पहले जब मैं काम करता था, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। ये बार ऑफ ग्लोरी आप देख रहे हैं, इसको मैंने ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पे खरीदा था और यहाँ पे बेच दिया था। ये कंपनी ने खराब रिजल्ट दिया था तो मैंने बेच दिया था, बट इस बार ऑफ ग्लोरी का मैंने ट्रेड किया था। तो इस सीजन के आसपास आई थिंक मैंने खरीदा हुआ था, तो शायद नेक्स्ट डे खरीदा था 12 ग्लोरी के, इस दिन खरीदा हुआ। ठीक है, बेचा क्यों था रीजन, सी मुझे पता था इसको कुछ ज्यादा पता है मेरे से, तो खरीद लेते हैं, इनको ट्राई करना था, तो ऐसे ही मैंने टेस्ट करा था, छोटा सा खरीदा कि भाई देखते हैं क्या करता है ये, तो मैंने खरीद लिया था कि यार 12 ग्लोरी मैंने खरीद लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर रिजल्ट खराब आ गया था तो मैंने बेच दिया था कि यार रिजल्ट खराब आ गया तो मुझे चाहिए नहीं स्टॉक, बट स्टॉक तो ऊपर ही गया। ठीक है, तो ये एक 12 ग्लोरी है जो मैंने खेला हुआ है, आई जस्ट प्लेड अराउंड विद दिस 12 ग्लोरी। एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ, आई प्लेड दिस 12 ग्लोरी ऑल्सो, ये 12 ग्लोरी भी मैंने खेला हुआ है। तो आई हैव प्लेड अराउंड विद मेनी बार्स ऑफ ग्लोरी, कि भाई खेलते रहो देखो क्या होता है। तो आई प्लेड विद स्मॉल मनी। सो डू यू हैव पीपल इन माइंड हु आर स्मार्ट? ठीक है, आई कैप्री, ओके वन मोर थिंग, बार ऑफ ग्लोरी ऑलवेज बीन गुड स्टॉक्स, बैड स्टॉक्स में बार ऑफ ग्लोरी का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ओनली इन गुड स्टॉक्स बार ऑफ ग्लोरी विल वर्क। Someone is saying Caprihans India. Let's look at Caprihans India. As on data, if you look, अगर सी यहाँ पे काफी हाई बार बना हुआ है, एज ऑन डेटा देख लेते हैं, कंपनी के नंबर्स तो काफी बढ़ रहे हैं और कंपनी ठीक ठाक है, क्लियरली ये 12 ग्लोरी था, आई थिंक खरीदना चाहिए था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अच्छा टाइम था ये खरीद। ठीक है, सॉवरेन डज टॉक अबाउट 12 ग्लोरी, बट जब हमें मिलता है, इसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है, जब क्योंकि इसमें ना गलतियां बहुत होती है, तो हम थोड़ा सोच समझ के देते हैं, तो ढूंढ देते हैं 12 ग्लोरी कि भाई 12 ग्लोरी बना है। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्लोट राइट, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस। विक्रम भाई आप सेशन 1 देखिए, उसमें मैंने स्टॉप लॉस का पूरा बात किया है, रिजल्ट्स आर द स्टॉप लॉस ऑफ एन इन्वेस्टर। what is the stop loss of a fundamental investor? Results. ठीक है, if a company posts pathetic results, then a fundamental investor should exit. And what is pathetic results? 30% drop in profits, more than 30% drop in profits is pathetic results. A fundamental investor does not lose if something bad happens. For example, let me show you this. Okay. This company was the highest gainer stock in the Indian stock market last year. ठीक है, ये हो गया 150 रुपए से यहाँ पे। स्मार्ट पीपल का मैं नाम बता देता हूँ भरत भाई। ठीक है, आप देख रहे स्टॉक क्या चढ़ा है, अब देखिए इसके प्रॉफिट ड्रॉप। ठीक है, व्हाट वाज द टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक, व्हाट वाज द टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक, ह्यूज ड्रॉप इन प्रॉफिट्स हियर, दिस वाज द टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। 213 से 146 हो गया,
दिस वाज द टाइम टू गेट आउट. एकदम बिग ड्रॉप इन प्रॉफिट्स. ठीक है. तो ह्यूज ड्रॉप इन प्रॉफिट्स आर टिपिकली अ बैड थिंग. ठीक है. तो जब बिग ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है. समवन इज सेइंग स्मार्ट मनी नोज बिफोर अस. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है. स्मार्ट मनी बहुत स्मार्ट नहीं होता. स्मार्ट मनी इज ओवररेटेड थोड़ा. उनको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी नहीं मिलती है, हमसे 10-15 दिन पहले मिलती है ज्यादा. स्मार्ट मनी इज नॉट सो स्मार्ट. दे आर स्मार्टर देन अस बट लाइक नॉट सो स्मार्ट. Okay. Smart people, if you go to discovery section, can you see star investors here, Bharat bhai? ठीक है. इसमें हमने कुछ नाम लिखे हैं, हम और भर रहे हैं धीरे धीरे करके. इसको भर देंगे बड़ा. यहाँ पे काफी स्मार्ट लोग के नाम जो हमें स्मार्ट लगते हैं. Are smart people always right? Are smart people always right? Yes or no? No, they are not always. They make errors also. Everyone makes errors. ठीक है. Am I always right? No, I'm not always right. I make errors. ठीक है. So I do make errors. I realize my errors quickly and I exit also. So I think I'm almost done. And in case you have not done the first session, please do the first session. It's important because बिना first session के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Please do the first session. Read the recording here. It's very important. ठीक है. And I think all this is quite important. What else? Yeah. All else being equal, low float is important. Yeah, this is the most important line which I want to tell everyone. Profit uptrend is very important and it should be expected to continue. Profit uptrend is very important. Always remember 4 words from me. Profit बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. डीप इंडस्ट्रीज का पी आई थिंक कम है पंकज भाई. फेयरली वैल्यूड है जितना मुझे पता है. फेयरली अंडर है, थोड़ा सा फेयर अंडर के आसपास ही है. ठीक है. तो आई थिंक बार ऑफ ग्लोरी देखने का टाइम फ्रेम एक सिंगल बार बनता है. ठीक है. सिंगल बार बनता है. मेरे से पर्सनली मिलना, आप मेरे को एक हमारे कंपनी व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा. व्हाट इफ बोरिंग इज हाई. हाई डेट स्टॉक्स मत लीजिए टिपिकली, बट इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो ठीक बात है. प्रॉफिट बढ़ रहे हैं टिपिकली होते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा. Is it okay to invest in SMEs after early days, during early days? मैं तो कर देता हूँ, but if you want, you can wait for some time. तो आपकी मर्जी. Why does public sector companies have low PE? Why do public sector companies have low PE? Simple reason: people expect lower growth from those companies. Is government very profit driven? Government is not very profit driven. Government is welfare driven. So public sector will not be like crazy after profits. They will do the right things. That is why they typically get low PE ratios, because people expect कि भाई वहाँ पे growth थोड़ा कम रहेगा. Is that always true? It's not always true. Some public sector companies can do exceptionally well also. It depends on the company, the sector, and a lot of other things. ठीक है. Profit बढ़ेगा तो price बढ़ेगा. Profit घटेगा तो price घटेगा. Does everyone have the Sovrenn app? Does everyone have the Sovrenn app? The Sovrenn app is out both on Play Store and Android. Please download the app. अगर आपको लिंक देना है मैं लिंक दे देता हूँ. प्ले स्टोर पे भी और उस पे भी है. लेट मी जस्ट लाइक ओपन द लिंक राइट. सो इफ आई गो टू Sovrenn प्ले स्टोर. ठीक है. ये हमारी प्ले स्टोर वाली ऐप. ओके. इसको प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए. हमारी एप्पल आई स्टोर पे भी, एप्पल के स्टोर पे भी है. उसको आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी Sovrenn की ऐप. प्लीज डाउनलोड दिया. बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ से. एकदम ऐप के अंदर आराम से आप कर सकते हो. ठीक है. ओके. डू यू Can Sovrenn tell us if a stock is structural or cyclical? Sovrenn typically covers structural stocks only. हम cyclical ज्यादा कवर ही नहीं करते हैं. ठीक है. Are we adding more stocks in Prime? Yes, we do add more stocks in Prime. Do we have internship opportunities in Sovrenn? मेधांश, I think मैंने आपका LinkedIn देखा है. आप मेरे को LinkedIn पे टेक्स्ट कर दो. ठीक है. किसी को Sovrenn पे इंटर्नशिप चाहिए मेरे को टेक्स्ट कर देना. हम we will find हम will find some ways to work together if we are hiring for that role. ठीक है.
तो आप मेरे को लिंक्डइन पे टेक्स्ट कर दो, हम वील फाइंड सम वे इफ यू आर हायरिंग। ठीक है, ओके, वेरी प्रॉब्लम। ठीक है, पंकज भाई आप फर्स्ट सेशन जरूर अटेंड कर लीजिए। ठीक है, प्लीज उसको कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन और ले लूंगा। तो एक और हेल्प मेरा कर दीजिए। ओके, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे होपफुली, प्लीज डू डाउनलोड द ऐप, इट विल हेल्प अ लॉट। एंड या इसमें आप एक फीडबैक दे दीजिए हमें ऑन द ट्विटर। ठीक है, ट्विटर पर फीडबैक दे दीजिए प्लीज। यूट्यूब चैनल आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है। यूट्यूब चैनल आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ये वीडियो को वहीं पे डाल देंगे। ट्विटर पे फीडबैक दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ वाज द सेशन, हाउ वाज द सेशन, हाउ वाज द सेशन? So I hope you understood everything, right? Please do the basic session also, and please do join this session. It is a complicated session. Please do it multiple times. Okay. See, what we do is information driven investing. हम करते हैं information invest, और इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल होती है। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। डिड आई एवर यूज द टर्म बुक वैल्यू? नो, आई नेवर यूज द टर्म बुक वैल्यू। इट इज वेरी सिंपल। हमने बस प्रॉफिट का बात किया। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो प्राइस घटेगा। ठीक है, सिंपल। आई विल एंड द सेशन नाउ। रिजल्ट्स आर ऑलरेडी प्राइस इन बाय द टाइम यूजेस आउट। नहीं भरत भाई, आप पी देखो ना, आप पी देखो, अगर 15 का पी है तो क्या प्राइसिंग। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, एक, ठीक है, सॉवरेन में जाते हैं। ये लोग बोलते हैं ये प्राइस इन वर्ड ना जिससे भी बनाया है बहुत गलत बनाया है। इंडिया में तो कुछ भी प्राइस इन नहीं होता है, मतलब बहुत ही गलत वर्ड है, कुछ प्राइस नहीं होता है इंडिया में। आई डोंट नो किसने बनाया, बट काफी बुरा किया उसने रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। तो ओके, इस कंपनी के रिजल्ट देखते हैं। ओके, ओके, इसके रिजल्ट आए थे 22 मई को। ठीक है भरत भाई, 22 मई को रिजल्ट थे। एक्सीलेंट रिजल्ट आए थे। ठीक है, प्रॉफिट बहुत बढ़ गया था। पी रेशियो था 10। वॉज इट प्राइस्ड इन द रिजल्ट्स? इस 10 का पी ओवर वैल्यूड? नॉट एट ऑल, इट वॉज नॉट एट ऑल प्राइस्ड इन। बहुत दूर था। 203 से कंपनी अब 350 की है। सेम कंपनी केपी एनर्जी, अगर आप देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीजी रेशियो एंड पी रेशियो। पंकज भाई, पीजी रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल करते हैं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। पीजी को भूल जाते हैं, हमें बस बढ़ते हुए प्रॉफिट्स को ढूंढना है। ठीक है, अभी केपी एनर्जी का प्राइस देख लेते हैं। केपी एनर्जी और वो KP, ठीक है, आप देखेंगे मई 22 को रिजल्ट आया था। मई 22 को रिजल्ट आया, ये रहा रिजल्ट। कुछ भी प्राइस इन नहीं था, नथिंग, नो प्राइस इन। कैन यू सी भरत भाई, वॉज इट प्राइस्ड इन द रिजल्ट्स? वॉज द रिजल्ट प्राइस्ड इन भरत भाई? नॉट एट ऑल, not at all. So many opportunities and they are not priced in. So many opportunities. Indian stock market hardly priced up. मतलब मेजोरिटी में प्राइसिंग नहीं हुई होती है, तो कम होती भी है कहीं में, बट मेजोरिटी में नहीं हुई होती। ठीक है, तो आई थिंक आई एम डन। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग। 1 second, आई एम स्टॉपिंग।